me any test and I can. Sorry? 1311. Yeah. Close Ninja. Yes, yes. So where is the package that Daniel sent you? Well, yeah, yeah. The way the day went. Everything. Yeah, exactly. Okay. No problem. Yeah, you have to save the workspace. Yes. True, true. All right, let me get started. Good morning, everybody. Monday, October 28th, 9:06 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you guys are joining us at superareas.com. And let's look at where the market is. Market is above R1, so R1 is done. We already had a retrace, so R1 is officially done. And let's next number is R2 for Nasdaq. So R1 is done. The retrace already happened, 20 points. Now we wait for 710 to 720 for Nasdaq, and for ES night session high. So this becomes night session high for Nasdaq, 665. 676 is the highest, 525 is the lowest for Nasdaq, and one more time testing.
Did you? $52 Canadian मैंने फ्राइडे को उसमें ऐड किया ताकि $100 करे मुझे टोटल वो ध्यान नहीं रहा मैं देख लेता हूँ ब्रीफ के बाद देख। साइकिल Live stream should be okay now, and the Zoom is okay, everything is okay. So say something from no, all right. Okay. चल रहा है क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ 22 से डिस्काउंट। ऑप्शन भी नहीं देते समटाइम्स देते हैं $300 in a day, no less than $62 in a day, and now you have to make $27.50 before you can get a payout. Yeah, no more 1,500 direct, because now they've doubled the for the rally account. You need to make $27.50 before they give you payout for FTT. No, they've removed $62 every day. अगर मिनिमम से नीचे ना हुआ डेज नहीं काउंट करेंगे. My audio is fine, guys. Then they give you 1,500.
oil is going crazy now. Sorry? The oil is Oh, crazy down.
Audio should be okay, no problem. I was mute when no issues. All right, Daniel's gonna come online soon, so should be okay, guys. Audio, video, no problem on Zoom. Everything is fine. Yeah, audio, video is fine. No issues whatsoever. उन्होंने करे होंगे मेरे 828 ट्रांसफर सिर्फ वो दोनों उसको से so this portion has come to minus can be transferred तो आपके 60-75,000 60-70,000 ये डॉलर यहाँ पर है महाराज मेरे 50,000 है विंडो चला दो आपके 60 है मेरे 50 है चला दो खर्चा पानी निकल जाऊंगा कभी सोचा था 50,000 खर्चा पानी होगा तो फेस आईडी किया हुआ उसके नीचे फेस आईडी KYC कितना है तो वॉल क्रिएट आपका पड़ा होगा फेस आईडी कैप्चर करें हाँ भाई ये नहीं Let's see if this mic is. All right, his mic is on, so I'm gonna go on mute right now. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. Hello, guys. Came to microphone check. If you can hear me, guys, microphone check. Ji, good morning. Choi Saab, good morning. Altaf bhai. Ji, good morning. Good morning. Ji, walaikum salam, wa rahmatullah. Altaf bhai. Hikesh, good morning. Ranjan ji, Rizwan bhai, Ranjit ji, good morning. Clifford, Amir, good morning. Anita ji, Ravi, good morning. Manpreet ji, good morning. Jagdeep ji,
Shindarji, good morning. Murliji, Mahib, Zakir, good morning. Majid, good morning. Nina ji, Amrit ji, good morning ji, everybody. A quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you, and we take no responsibility for any profit or loss, and so you're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always break your stops, and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think, and treat this market the very first day you trade. And here are the areas, guys, and these areas are not buy and sell offer or buy and sell areas or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. So today our S&P 500 high is 59.12 to 20, low is 58.40 to 30. Nasdaq is 820 to 860, 20,820 to 860. Our low for Nasdaq is 20,430 to 380. Base is up, pressure is up, base is up, pressure is up. Actually, we're done while we're sitting here. It came down very nicely after 8 o'clock, hit our S1 and shoot to the upside. Dow break night session high, Russell 2000 break night session high, heading towards R1 area, daily R1 area on our Russell 2000. Nasdaq is not, if you look at the Nasdaq, whole night it did not move much. Very tiny range, very close to just kiss our S1 area and bounce back up. And now here's the weird thing. The weird thing is, whenever market open with the gap, and that's in history, market always fill up the gap, and it means all these markets, if you see Nasdaq, Dow, Russell 2000, they all open with the gap but did not fill up the gap. Go low would be a good strategy. So high to go low. Remember, price must fill up that gap. 480, 20,480, S&P 500, not 480, the top, yes, somewhere, 490 to 480, and same thing with S&P 500. So S&P 500 should come down and fill up that gap, the gap we had from 40 to 41 area. So high to go would be a good strategy. No news today, very calm, smooth area to area. And actually people are done from our S1 area. And today the market, those are brutally going down, is our crude oil and natural gas, crazy going down. Natural gas, guys, 12-24 contract, December contract, please everybody change your natural gas contract, and went to 100% our expected low for the day. When I came here, I came to office, it was at $2.94, and this whole push to the downside was after this 1.5 hour. We had this a big push to the downside and went to exactly our 100% expected low, and bouncing back from expected low. Crude oil very close to our expected low area. Our expected low for crude oil is $66.70, and so far it reached to around 66.90, 66.92 area. Why crude oil is down? And look at the $5 push to the downside from Friday high. Anybody? Why crude oil is going down? Why natural gas is going down? Anybody? Any idea? Even in the chat room? And gold is, gee. Yes. The main reason is they didn't destroy their oil refineries and oil. That's why it was. I don't know. They're playing with us or what's going on. Gold is up. Gold is up. Gold pushing up right now. If you see our gold base was down, pressure was down. Now it's pushing up, trying to test our 66.60 area. Right now it's above PP. So gold, again, I'm telling you, gold only one strategy. Whenever gold drop, go long on the gold. Never ever go
short on the goals. If it's my strategy. Some people they do that, but it's up to you guys. British pound high for the day is done. And if crude oil is going down, definitely one market that is 100% related to crude oil is our Canadian dollar. And Canadian dollar down, just suffering at our in between R1, PP and S area. Euro, our expected high for the day is done. Euro, British pound both hit our expected high for the day. And they're done for the day if anybody who go long from our second night time. And then, guys, I want to announce something here. Look, somebody's lifetime work and lifetime hassle, if somebody is giving you a privilege, please don't abuse that privilege, okay? We know people are selling our areas. Even I just when 65 area and somebody call at buy at 65 area, and the guys that are selling even signals, and even they start their own services and they're just selling the areas. Remember, if we find out, and we will find out, the rest of your life you're banished. Not only banished, maybe you will take some legal action because you signed a paper with us. And other thing is, people are making some groups here, and they're making groups, and they're taking money from each other, and they're losing money, or they're abusing that money, or using that money. We have nothing to do with those people. And if you want to do mentorship, and if you want to come and talk to us, and get franchise from us. Another thing is, never, ever, ever come and talk to me. I cannot make any of these decisions. Look, even superareas.com or winlifetime.com, our CFO, COO, CIO is Mr. Rafi, okay? You can come and talk to me. I cannot make any decision. I am the one who makes long-term goals and strategies. Everything else, day-to-day oversee of the operations is Mr. Rafi. CFO, who take financial matters, is Mr. Rafi. And CIO, who's providing information, technicals, technology, strategies, everything is done by Mr. Rafi. Please don't come, don't talk to me. You go talk to him. He will help you out. Rather than you banish from this service or you lose your privileges, come talk to him, right? So if we find out, trust me, not only we shut down you, banish you for a lifetime, we'll take maybe some very strict actions against you guys. Please, if you guys find out somebody's breaking that law, let us know, okay? Because we work like a team. 17 years, I've been sitting at same place, same location, and we have our name and our image. And we don't want anybody destroy our reputation or image by just coming to market and destroy that. Please, again, I'm telling you, it's only for you and your family. You cannot use for business purposes. If you want to use, come and get the franchise, get permission from us. We don't mind you're doing, but come talk to us, okay? And please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here, Dave. All right, yeah, he's done, and our area is S1 is done as well for NASDAQ. So, and there's a specific reason he said what he said. Couple of guys took over software. They went to a couple of hackers group and say, let's break it. All right, you can get the software. Where are you going to get the areas for? Where are you going to get the live stream from? So we're finding out a bunch of guys getting together and trying to replicate this industry and say, okay, it's software. So I'll make sure personally to ban everybody who tries to reverse engineer this. Yes, you can write NinjaScript code yourself. Just don't offer it to others for commercial purposes.
And if you go in super areas, you sign the whole thing every time. So we have your IPs, we have your names, we have your KYC, we have everything. So when you hit I agree, so I'll make sure that I'll fight to bring each and every one of those who will exploit us, right? So whether through areas or software, anything like that, because we spend countless hours, right? So just to today's, this rant was about just don't, exploit us. This is a service we give you, and it's billions of dollars moving on areas, and the precision of it, just $300 a month is not at all worth taking that risk. So if you don't like it, uninstall it, sell the software to somebody. It's okay, but just don't try to make a business out of it, to start creating groups and sharing areas, because 5 of them, what they did was, 5 that we know, they take an image of, and then they're sharing together. It's fine. Like, as long as all 5 of our subscriber, it's an okay thing. But if you're leaking this to non-subscribers, I will make sure. I fought Dish Network. Just remember that. I took 2.5 years to fight Dish Network, the U.S. company, public traded, on copyright intellectual property. So just, don't lose your privilege, please. Thank you. All right. Yes, one pe khadi hogi ji. Anybody has shorted from R1 is technically done, right? So my FTT is still not working. Still not working. Great. I could not short. Let me just talk to them on Discord. किसी को नहीं चल रहा नहीं मेरा नहीं चल रहा, मैंने ज़्यादा चीखा है उनके बारे में। मैं कहा भाई कल भी आपका एक इंटरव्यू चल रहा था लोकल टीवी में। अच्छा ये पहले रिकॉर्ड होता है कल पहले रिकॉर्ड एक लड़की है वो the lowest it went was 560, so exactly bounced from the area. So R1 done, S1 done for NASDAQ.
What's the pressure? Pressure is up today for Nasdaq. Let's see if it bounces up from here. Even though Iran Israel masla hai, market नीचे नहीं गई. नहीं वो सॉल्व हो गया है सॉल्व हो गया. जम उसने 140 जट फेंक दिए और वो ऐसे ही उन्होंने दिखाने के लिए साथ में स्टेटमेंट भी कर दिया कि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं हम वहाँ नहीं कर रहे हैं वो मसला है ना ऑयल का उड़ा नहीं सकता ऑयल उड़ा दिया ना इनका नुकसान है ऑयल उड़ा दिया उसने सारा अरब का उड़ा देना है ये मसला है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्शन के हैं इलेक्शन है 11 तक अगर ऑयल बढ़ गया तो समझे let's see. All right. All right, guys, I'll be right back.
पहले ऑर्डर डालें नहीं आपने किस प्राइस लग गया आप जब पे होगा तो दिखाएगा ना टीटी से भी कोई भी नहीं मिला ये आपको कुछ मिला है टीटी से अभी मैंने बनाया नहीं, अभी अकाउंट बनाया ये पहले आप कर रहे थे कर रहा हूँ अभी। अभी भी कर रहा हूँ मैं। नहीं वैसे मेरा भी एक उड़ गया था किसी ने पूछा अभी क्या चल रहा है टीटी चल रहा है, ये टीटी के ऊपर चल रहा है। मैं टीटी बना रहा हूँ, 600 बनाना होता है मैंने अब टीटी। 300 से ज़्यादा नहीं बना मेरा बड़ा कमला बड़ा, मैंने 600 बनाना होता है, बस रह गया $40 है, $30, 600 हो गया, 569 हो गए। ऑलरेडी किया ना, बढ़िया और सीखो कट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। क्या आ गई 543 510 543
Order submitted.
नाल तक ऊपर जा रही है नीचे स्टक है ट्रेन नहीं बन रही कोई वहीं पे है आपके पास हाँ जी 3 डाइवर्जन होती हैं फिर भी ऊपर नहीं जा नहीं नहीं 15-10 की डाइवर्जेंस इतनी स्ट्रांग होती नहीं है ना आपको पता ही है. Where are we for the area? 575.
So starting tomorrow on go-to meeting, nobody will get areas. So that's the corporate decision. All areas will come through super areas. So go-to meeting, anybody who wants to listen to brief will come. Areas will no longer be posted here. So that's the new thing. New. Here, right? Yeah, I mean, वो जो यहाँ पर लग जाते थे ना ये, this today is the last day. आपने area देखने, watch it through super areas. Every single thing you do super areas, it's going to get recorded. How many times you stayed on it, how many times you logged in, if you shared the areas. So, because we're now narrowing it down, 12,000 members, who's leaking the areas. So randomly we're gonna say, maybe you get 66, maybe you get 65, maybe you get 35. That one thing, now more people have to come together with the collusion. So this was the idea, people take this, take a picture, send it to everybody, said here's this. So I have a guy whose name we have now inside. He has a group of about 2,000 people. And he's selling this for $25 per month. So imagine 2,000 people, $25 a month selling this, how much revenue it is. So we're about to tackle him, he's just making a business out of it. So I mean, we help so much, funded account, GFF, copier, code, whole night. If you're gonna do a business out of our work, we'll make sure that we bring you down. So, no problem. No problem. Take care, Bob. Because this is you can take the software, I don't care. Funded account, I don't care. How these numbers come out is the key to, right? So we have to do our own protection to make sure. So somebody is going to get wrong areas starting tomorrow. And when they're going to post it, they're not going to get hit. They're going to have some problems. Right? So it's all about the numbers, right? So let's... Sorry? Everyone will ask for the refund from the guy. Yeah, because again, if I tell you to sell from, for example, let's say, if one person has this as 96, doesn't make a difference in the chart, right? How would you know you got 96 and she got 97, right? So we will become part of that group and we'll see where the areas are being leaked, right? So that's why we had a quick 20-minute meeting starting tomorrow. On your live stream, you will not, so all the areas are on superareas.com. Everybody will be getting a different rate. No. So what happens is, let's suppose you have 50 of you here. So this is my whole network, right? How do I know you're leaking, I'm leaking, who is leaking, right? So this is a general number. So first group, I worked for Dish Network, and how they protect pirates is they don't know who's restreaming their channels, right? So they take a batch first and they send an ECM, right? So out of it, maybe you got, if you are leaking, one number is different. And that picture got sent to that group. So then we will know which person is taking, so that we're gonna narrow down group by group, because remember, there's 20, there's a big matrix. Now the picture you got versus a picture somebody else got may be slightly different, and then we're like, all right, this is the person who is deliberately taking these numbers and sending it. Because here, you can take this and send it to your buddy. Hey, these are support and resistance levels. Pay me $25, $50, and I'll share the areas, right? So don't worry. I've been through this enough time. We'll make sure that at least somebody will have losses. चैट में नहीं आएंगे अब, सिर्फ सुपर एरियाज पे आएंगे. तो अब आपके सुपर एरियाज लेट्स से कि हमें नहीं लेंगे ना. अब आपको, अब हम यहाँ तो यूनिवर्सल है ना, हमें लगा कि यार आप दे रहे हो, ठीक है, हम एक चीज चेंज करेंगे जो शायद अब आपको नहीं पता कि आपकी चेंज हुई है या इनकी चेंज हुई है. अब हमें एक ग्रुप आ गया ना, हमने उस ग्रुप को नैरो करना है कि कहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपने लॉग इन किया सुपर एरियाज में, आपने देखा यार यहाँ पर 6 है, ठीक है,
एक है वहां तो जान ही नहीं है, राइट? अगर हम ऐसा कुछ आई नो सर आप स्नैपचैट जैसा करो इसमें, इसने पिक्चर लिया नहीं वो लेकिन इतना भी तो मुश्किल नहीं बनाना ना। सिर्फ सुपर एरियाज में जाना है। जब आप लॉग इन करेंगे आपने ये पिक्चर भेज दी, राइट? किसी को भेज दी कि यार आज के ये एरियाज हैं। अब आपको किसी और पेड मेंबर के साथ कोल्यूजन करना है, यार तुम्हारी फोटो में क्या है, या आपकी फोटो। तो दैट्स हाउ we're just trying to protect our work, that's it, nothing in terms of for I don't understand, for 300 a month somebody still wants to cheat 300 a month. It's beyond me, but it's okay, I'm not worried. मेरा FTT का चला ही नहीं अभी तक। समझ में आया तो ठीक है, समझ में आया इसको जाओ। मेरे आपको दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हैं दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। नहीं, ये देखिए मैंने ट्रेडिफाई सही है, पोर्डिया सही है, ये मैं लॉगिन करता हूँ ना, ये देखिए आपके पैसे लेने वाले बन रहे हैं ना, उनको बंद कर नहीं डॉम ही नहीं चलता। इट्स क्रेजी। ट्रेड लग रही है वैसे। नहीं लग रही ना, अकाउंट बैलेंस सही है, आई कैंट हिट द वर्ड ट्रेड। लेट मी टॉक टू come on Tyler, fix me. Scott. वो ये स्क्रीन कैसे एक्सेस करते थे सर? ये तो सिर्फ मेंबर्स करते हैं। नहीं देखें, वो आपने आईडी शेयर कर दी, किसी ने आके आईडी पिक्चर ले, आपने इसकी फोटो ले ली, फोटो भेज दी ना, आपके पास तो एक्सेस है। कोई ऑफ कोर्स पहले तो कोई मेंबर है ना, लाइक हमारे पास वो मेंबर हाथ से भी लिख के दे सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब आपने अपनी कहाँ से नंबर निकलेंगे? आपके सुपर एरिया से निकलेंगे ना। अब जो आप हाथ से लिख के नंबर भेज रहे हो, हमें आपको तो नहीं पता कि आपके नंबर एडजस्टेड है कि नहीं। कौन से एरिया में हो रहा है? कनाडा में? नहीं, एक बंदा तो भेज रहा है उधर पूरी आयरन कम्युनिटी में, तो यानी हमारे पास मेंबर्स 12,000 हैं वर्ल्ड वाइड। इट्स नॉट ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, 15 साल से चल रही है यार। तो उन्होंने अपने कोई 1000 के, 2000 के, 100 के ग्रुप बना लिए हैं। लेट्स से अगर आप 100 का भी ग्रुप और $25 ले रहे हो, तो आपके 25 की आ गई ना। आप कहते हो यार मैं ट्रेडर हूँ, मुझे एरिया निकालने आते हैं, ये मेरी सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो आपने एक बिजनेस बना लिया। पहले तो आपका एग्रीमेंट रहता है, सुपर एरियाज में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, इस पे इतना बड़ा एग्रीमेंट लिखा है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू टेक दिस एंड रीसेल इट। ओके, सो बिकॉज देन यूर तो सिर्फ जो पिक्चर वाली बात थी कि वो अभी यूनिवर्सल है, सारे देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग टुमारो अगर आपको फियर है कि अब आप कंफर्म करोगे किसी से, यार हे विक्रम भाई हमने एरिया लीक करने हैं, आपके नंबर पढ़ो, मेरे नंबर पढ़ो तो अच्छा There'll be more effort Oh, to eh. even go, because हमें नहीं पता कि कौन से नंबर शेयर हो रहे हैं। यस और उसको ये नहीं पता कि उसका नंबर ठीक है कि नहीं। Yes. So they'll have to go through the Oh man, by the time they're gonna say man it's not worth it, because एक रॉन्ग आपका एरिया गया ना थोड़ा सा, उनका लॉस शुरू हो जाएगा, आपकी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर आफ्टर। एनीवे, इंटरेस्टिंग। It's an extra job for you. यार मैं रातों को 4 बजे सुबह बैठ के ATMs लिख रहा हूँ, पे कर रहा हूँ कि आप लोगों के पैसे बन जाए। और स्पेशली जो लास्ट नाइट मैंने ATM लिखी है, फ्री में जाएगी सारों को, हर नैस्डैक की स्विंग लेती रहेगी। सो इन 3 hours it made $1,000. सॉरी, आई पोस्टेड ऑन TikTok। हाँ बनेगी, बन जाएगी, लेकिन पहले हमने जो लीक कर रहा है ना उसको पकड़ना है कि भाई इससे पहले कि हाँ मैं वही वाली। तो I'll because I can't trade today anyway. I've done Perdia, I've done everything else in areas you guys, so I'll explain
मैं बनाना चाहूँ भी. Okay, so let's focus on NASDAQ, how NASDAQ moves. Okay, so we look at area. So area is that 20,700 sell, okay, and 20,600 buy. Let's, for example, these are two areas. Now the price is done here, price is done here. How do you make money in between, right? So the price of NASDAQ moves like this, goes up, down, up, down, up, down. There are lots of ways you can make money in this. One option is overbought, oversold. Okay. Now, we discussed this on Saturday with a bunch of developers and traders. Problem with this overbought, oversold is, let's look at overbought, oversold. 30-20. And NASDAQ is now going into, let's do a green marker. NASDAQ is going into severe, so 40-point swing. This is overbought. Okay, 30-20, it's overbought. And what does it say at the bottom? 99.5%. And you think now price will come down because it's overbought. Where do you enter? Let's look at this number, 20,000. Now we are at 20,040 because the swing was 40. Remember, it keeps going up and up and up. RSI has gone so high. This is a swing, and you are expecting it should drop. But where do you enter? Do you enter here? Do you enter here? Do you enter here? Where do you enter? Because even at 99.5, it can start to go like this now, right? And then you're like, I have entered too early. In the कि यार यहाँ से short होना है लेकिन early enter हो गया. So some of us, we did an analysis and they said, okay, don't enter in an overbought trade here. Do not. Let it go fully. I don't care, 40 points, 50 points, 60 points, 100 points, let it go. Remember last week, 70 points. Before that, 87 points, 67 points. And we are thinking, यार इसने कब आना है? कब आएगी? आपने क्या करना है? So let this make your higher high, okay? Wait for the midband, and then let it make a divergent. Make another high. So you have to make sure it breaks this number first. Then you can sell. Don't sell in the first swing. Okay, समझ आई कि अभी swing 20 और 30 points की हो गई. लेकिन अभी छोटी है, लेकिन you know sometime आप कहते हो यार कि मैंने 99.5 पे सेल करना है. नहीं अभी तो आपने सेल करना. जनरली आप यहाँ सेल कर देते थे ना कि यार के 70 पॉइंट चढ़ गए, सेल कर दो, इसने वापस आना है. So if you wait for this price to then go higher and then sell it, your probability of making money in this overbought trade is better. Yes, it can still continue to go climb, but do not enter a trade in overbought in a single swing. Let it touch midband and then go after the midband. So if you go back and test lots of overbought swing, you will see that it's better for you. Same idea with oversold. Let's switch to red color. Oversold. Again, wait for the midband to test and enter from this number to go long. Don't enter here. Let it test the midband first. Make a divergence in RSI. So that's one. Anybody who's doing an overbought, oversold trade on 30-20 RSI, if you let it touch a midband first, you will have a less chance of failure. I don't know how many people do, but this is one thing. That only 30-20, not 15-10 at all. Yeah, sorry? First instance, trend change हो? नहीं, trend नहीं change हो. First instance, Yeah, trend change हो. जाने जाने दे. दे. full bar, फुल ओवरबॉट हो जाए या ओवरसोल्ड हो जाए, ठीक है. उसके बाद retrace रिट्रेस मिड बैंड टेस्ट हो लेने दें. अगर कई दफ़ा ऐसे होगा,
price will start to come down here. It's okay, you missed that trade, you missed it, no problem. But imagine all of us sometimes fear, where do we enter? When we enter at 99.5, it just keeps going higher and then you're like, I've entered too early, right? So no more entering at any number until it has tested a mid-band, especially the huge swing, the 99-point swing. The second ATM that I quoted last night, it is beautiful because the way swings work is makes a higher high. If it makes another higher high, you will have a dotted line right here. Everybody sees a dotted line. That's called the previous high. Everybody sees this. It will automatically buy for you here. Automatically, hands-free. Without, it will automatically put as TP for you. Right here, TP. It will automatically put a stop loss for you. Sir, हम रख रहे हैं 60 ticks का. And it will automatically trail for you. It will, now the way I code it actually checks if the swing is worthwhile for you or not. All of it checks for you. Is the swing good enough? Is the previous high swing is good? So more and more conditions that I wrote, so you can always check that at a certain point. So this automation last night made me $1,000 in a matter of 4 hours, from 5 a.m. to 9 a.m. How much profit? And so 7 trades it took as my video, and 5 were successful, and those 5 made 975. So remember the ATM we had, the black candle, we just keep going. But problem with that is if there's no swing, we can't, like, it's failure, right? So if there was no swing, it would just go down and you will hit a stop loss. This one checks everything. This one says, is there a swing? Is there am I going in long? Am I going short? So it's pretty intelligent this way. So, but before I release it, we have to make sure we find the person who leaks it, and that. Also, dot should be a green, right? Yeah, this will be green. So here's the thing. Let's do it in the right color. 30-20. So the parameters I gave it last night is you have a swing. It makes a higher high. Doesn't matter how big the swing is. Could be 5 points, could be 10 points, could be. It comes down, touches a mid-band, right? It will go make another higher high. It will enter to buy right here. That, and how much am I targeting for? Is we are going to target at approximately 60 ticks. 60 ticks TP. How much stop loss we will put? 30 ticks. The 30 ticks stop loss, 60 ticks profit. And it is very intelligent, is in a sense, if the price actually moves 5 point कितने होते हैं? 20 ticks. If it moves 20 ticks, it will move this to break even automatically for you. So you're not losing a trade. The moment it moves to 30 ticks, it will start trailing 20 behind you. Literally, it is a gold mine of a NASDAQ swing trade, and you just set and forget. So when you are when you're waiting for an area, this will trade for you. किस टाइम रन करना चाहिए? Any time, 24 घंटे. नहीं कोई एरिया से बाहर. एरिया तो बाहर. Stop loss 30 का, right? Stop loss 30 का. और सर 5-7 पॉइंट के ऐसी बात निकाल दी. नहीं मैं 30 टिक्स है. 30 टिक्स है. कितने पॉइंट्स बनते हैं? 7. तो 7.5 पॉइंट तो आपको कुछ देना है ना नैस्डैक को. हम पिछली दफा ऑटोमैक्स में 28 लगा रहे थे ना, यहाँ मैंने 30 लगा दी. So this is how the bracket will work. This is your entry. Stop loss 30, profit 60. वही है कि अगर 1-2-4 पॉइंट बीच में से निकाल भी लिया तो वो No problem. जो टोटल है उसमें उस- आएगा.
Net will be positive, 100%. So I'm testing it tonight with my original accounts. होता क्या सर, कई बार हम डरते रहते हैं, ले ना ले ना, उसमें निकल जाती है बहुत. Emotions में मसला ये overbought, please everybody, overbought, oversold, wait for the trend to touch the midband and then go into it. So number one, again, coming to areas, you guys can do blind trades with an area. Like today, R1, S1, S2, S3, R. So again, coming back to all the methods, number one is area. Number two is your midband or gap trade. Number three, you guys can do low of the top or the bar. Then you can do other type of trades, right? So, any questions on these two methods we're working on? Because eventually what will happen is I will not publish the areas. Trust me. I will say, you know what, only these people get areas. If we can't control the leakage, I will make it to make sure that nobody gets an area. It's okay. But not, that's the ultimate problem. If we have to solve a problem, I will say we will hand select people who get areas, because rest of the people can still do midband. So if this leakage problem becomes too big, where people are taking and we still can't figure out, that's it, end of the day. He said that he'll start posting areas, and then that's Let's not post areas for a week. huh? No, exactly, no. And the areas are only posted in Yeah. your Zoom. Yeah, No, nobody gets there. no. Nobody gets the areas for a week. No, everybody has to. But right now, everybody's going to get areas. But starting tomorrow, your areas are coming through your website, not through anything else. But you have any idea? We have idea on 5 individuals. Yeah. So we blocked one today, and he's texting him. He's like, the guy's so goddamn stupid. While he's on the phone, he's saying, यार 65 से बेच दो अपने लोगों को. Oh, Daniel is listening to me. He's like, come on, man, like at least mute your goddamn thing, man. Like we can listen to you giving our thing live on somebody else. वो साथ जैसे डैनियल वो आया गो मीटिंग्स में आए, उन्होंने अपने एरिया लिया और एरिया लेके आगे क्या कह रहा है, डन फॉर द डे गाइस. एंड डैनियल इज लाइक कम ऑन मैन, लाइक इस तरह तो नहीं करो यार. So and then we sell a lot of people who are struggling, they're going to be the one losing, because what happens is anybody who's making money, and just don't abuse the system. That's it. It doesn't take. It's ethically wrong. I have one thing. Okay, how much money will you make? 100, 200,000, 300,000, 500,000. नहीं यार बना लो. Oh, no problem. फिर उस पैसे का फायदा कोई नहीं होगा. ये एक दफा हम गलत एरिया पोस्ट करेंगे और फिर आप लोग फंस जाओ. Sir, this ATM is a standalone. Will it work with other RSI one you? No. This is different. This is different. Two different ATMs. So only one will work per setup, right? Per setup, yeah. So either you will, just like we have ATM for midband, Automax, so you will decide which one to use. So this is the one I'm writing code for it tonight. When this is successful, I will move it here. Because more and more we want to automate this easier for you, right? And of course, that's the... This one is kind of against the trend, right? This is always against the trend. Overbought it, because remember, overbought, oversold is like area. Always against the trend. Well, this one is going to go with the trend, So, two things. ऐसे ही बताना था कि कल आप सेमिनार करते हैं सैटरडे में, ये वाला बोर्ड आपको नज़र आता है, जैसे ही दूसरे बोर्ड पे जाते हैं बताने के लिए वो उसको नज़र नहीं आता. नेक्स्ट वीक फिक्स हो जाएगा. ये काफ़ी दिनों से मैं नहीं हाँ मैं ये फिक्स हो जाएगा. जो टीवी का कैमरा है ना, यहाँ से वहाँ गए हाँ स्क्रीन पे गए बताने के लिए कि ये देखो हाँ वो नज़र ही नहीं आता. वो नज़र नहीं आता. मुझे समझ आ गया. कैसे पता चलेगा? वो नेक्स्ट वीक फिक्स हो जाएगा. सैटरडे भी देख रहा था आपका. नो प्रॉब्लम.
उस ऑफिस का वो प्रॉब्लम है क्योंकि वो टीवी पे करते हैं। तो वो कुछ इधर ही है। नो क्या प्रॉब्लम, बता रहे हैं एग्जैक्ट। तो या प्रोजेक्टर इधर आए या वो स्क्रीन नजर आए। अब उनका भी यही कंसर्न था, वो आशमी साहब को देख ही नहीं पा रहे थे। दोनों नजर आए नो प्रॉब्लम, या फिर इसी में वो भी नजर आए, एक ही में नजर स्लोली स्लोली। कल तो हमारी एटलीस्ट सेमिनार अच्छा गया, हमने स्टारलिंक लगाया था, ऑडियो का भी मसला नहीं आया, वीडियो का भी नहीं। ऑडियो आपको बहुत स्लो है। नहीं, कल नहीं होना, आवाज बहुत स्लो आ रही है। कल कल वाली जो सैटरडे का नहीं नहीं, यस्टरडे का देखिए। यस सर, स्लो है, हाँ, ट्रिनिटी स्लो है। सैटरडे वाला आवाज स्लो आ रहा है। मेरे टीवी में लगा देखता हूँ, जब 8-10 का होता है ना वो, मुझे इसको 20 करना पड़ता है। ओके ओके, आई विल ट्राई टू गेट दैट या फिक्स। तो ये इसको यहाँ पर रखो, ऊपर जरा 1 मिनट के लिए वॉइस देख हाँ जी हाँ जी, मुझे दें नहीं डेस्क। हम जले में 132 1 3 2 9 1 yeah. अब मेरा समझ नहीं आ रहा कैंडिल में पहले का है। हाँ हाँ ठीक है। और ये मैंने बाद में डाला था। हाँ। 59 ये जो फ्राइडे वाले दिन ये अभी उनको पहुंचा नहीं है, आपने डाला कैसे था? क्रेडिट कार्ड से इसको ऐड करके डाला। एक सेकंड, तो दोनों का बैलेंस मुझे $100 करना था। so, ये पहले के थे पैसे? जी ये पहले के। नहीं नहीं, और बाद में मैंने ये $88 कैनेडियन मैंने फ्राइडे को डाला ताकि ये दोनों बैलेंस हो के 100 बन नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहले के कुछ नहीं था, वो पहले के अकाउंट खाली था। देख सकता 52 दिखा रहा है। ये वो हैं $52 जो आपने US डॉलर्स से कैनेडियन मूव किए, ये वो दिखा रहे हैं। ये देखें मूव्ड है, ये देखिए यहाँ पर चेक करें, we move from your Canadian balance पिछली दफा मैंने ना 150 का लिया था तो 500 डाला था। हाँ हमने ठीक है 500 डाला ना, ये बाकी देखिए पैसे रह गए थे। 447 500 डाला, मगर सारी ट्रांजैक्शन देखते हैं। 500 डाला, 447 भेज दिए, ठीक है, पीछे रह गए 500 माइनस 447 $53 और आपने भेजे अगेन 88 मोर। आपके पास 141 होना चाहिए। जी मतलब US $100 बनाने के। यस यस जी जी बोले, दैट्स द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट मैन, no no no, I'm just trying to help. मैंने 90 परसों हाँ हाँ 98.45 भेज दिए, yeah So we got $80 yeah discount yeah, that's good, that's good. बस आज पहुंच गए इनके पास। फिर इनके तो $50 किधर गए हैं? Your Canadian completed, आपने वापस तो नहीं मंगाए अपने बैंक में? नहीं, कल मैंने कुछ करने की कोशिश तो किया। मेरा ख्याल आपको वापस चले गए, मुझे लगता है। अभी तक तो वही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड,
फ्राइडे से नहीं आ रहा है, लेकिन अमाउंट वहीं पे शो कर रहा है 5280। अगर मैंने मूव कर दी हुई गलती से, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि 5280 मूव्ड, इट सेज 5258 मूव्ड वेयर? US dollars. Okay. इसका कोई सपोर्ट भी नहीं होता है हेल्प डेस्क। नहीं इनका payments, let me see. Total balance is 52. Where is this $88? It says spent this month. कि 25 अक्टूबर को वो कह रहा है ना, आपने भेज नहीं है $88। कहाँ दूँ? आपने फास्ट ट्रैक को वो लिखें, आपने खुद भेजे 88 कैनेडियन भेज दिए आपने, उन्हीं को भेज दिए। जी हुआ तो है। हाँ, तो आपने 88 कैनेडियन $50-60 US उन्हें भेजे। ये देखें जो आपके मिसिंग पैसे हैं ना, वो ये लिखा हुआ है कि आपने पैसे मंगाए $88 और वही आगे भेज दिए, तो अब उनको पूरे नहीं पहुंचे। तो इसीलिए तो मैंने वो कहा ना कि मैं उनको वही पैसे भेजे और वो 52 पहले से पड़े गए। हाँ, तो वो दोनों मिला करके 100 US बनने थे। नहीं आई नो, लेकिन आपने बनाए, अब आपको 2 पेमेंट हो गई आपकी। अभी आपने उनको भेज दिए 50-60 US डॉलर्स, ये चले गए, अब बाकी भेजने हैं ना। तो मैंने यही तो कहा, बाकी मैं वहाँ से वो जो बैलेंस आई नो वो समझ आ गई, लेकिन आपको चाहिए ये था कि दोनों को कंबाइन करके एक वायर करते हैं, ऐसे होना चाहिए था ना। आपका पहले बैलेंस बढ़ता और आप एक वायर करते हैं। आपने जो पहले मंगाए $88 वो भेज दिए, अब आप कह रहे हैं मैं बकाया भेज देता हूँ। तो एनीवे आपने ऑर्डर प्लेस किया उनके साथ, FTT के साथ? ऑर्डर प्लेस नहीं, अपनी किस चीज़ के पैसे भेजे? अकाउंट लिए? अकाउंट तो मिल ही नहीं रहा है ना, जब तक आप 100 नहीं देंगे उसको। नहीं क्वेश्चन ये कि पहले ऑर्डर प्लेस किया है? ऑर्डर प्लेस किया था। अच्छा, मुझे उस ईमेल खोलने जो ऑर्डर प्लेस किया। बैक अप टू 600 गाइस। डन हो गया, बैठे हैं, कोई एरिया नहीं मिडल में आ गई मार्केट। Because if you even look at NASDAQ right now, it would have given you a profit in previous swing and that current swing. It would have broken beautiful trades. Just looking, if you look at a higher high of 25.85, the next higher high is 592. It would have taken a buy order given you, and then it would have taken another buy order after 593. So lots. ये वो तो एरिया था ना, वो तो एरिया, लेकिन जो लोग फ्राइडे से R1 से डरे हुए थे ना, आज उन्होंने R1 को छेड़ा ही नहीं। मुझे पता है क्या हुआ है। उन्हें कहते एक्सपेक्टेड हाई से ही करेंगे। लेना तो पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बड़ी बढ़िया स्विंग आई है, गिर गई जितनी आते गिराई पहले इन्होंने। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोबारा वेट कर, मैं भी कल गिरी तो बाई लगी ना आपसे। आपने लॉन्ग की बनाई है सारी, वैसे सेल बन गई, ऊपर जाएगी सेल। एक ऑर्डर प्लेस किया है, एक सेकेंड, सबसे आखिरी ऑर्डर 82,390 है ना, $98। Here's the good news. They have given you an account for $60 में। नजर ही नहीं आ रहा है? नजर ही नहीं आ रहा। अब रिदमिक में लॉगिन करेंगे तो नजर आएगा ना।
वो कह रहा है कि ऑर्डर हैज बिन कंप्लीटेड। मिल गया हुआ है। हाँ, आप वो आपको 60 में ही रैली दे दिया उन्होंने, उनकी टीम ने। Can we combine with your code or like $60? Is it like $60 even with your? No, but his 60 तक तो नहीं गया था, 72 तक गया था, like 65%. No, so 180 minus 65% is $163. So आप लकी हो गए भाई, अभी आएगा देखिए। खुल गया सर। तो इसलिए आपने वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया, उधर तो पैसे 60 ही भेजे उन्होंने, 60 ही लेके। अगर आपका अकाउंट देखते हैं अभी, एक सेकेंड, Sorry, कितना है उसमें बैलेंस कितना था? ये आ गया ना ब्रांड न्यू अकाउंट, चल रहा है भाई। चल रहा है। बनाओ पैसे आप। वेरी स्ट्रेट। नहीं स्ट्रेंज नहीं, लकी, लॉटरी खरीदे यहाँ जाके। नो प्रॉब्लम, सॉरी। The sale ended last night. Last night at midnight, the FTT sale ended. Now they're back up to the regular rate. Sale लगी थी कि उन्होंने कहा था हम कुछ दे रहे हैं। नहीं, डिस्कॉर्ड में पड़ा। So आपका अकाउंट एक्टिव है। पैसे दे देना पहले, फिर जितना हाँ, sale लगा है। एग्जैक्टली। फिर चाहे रियल प्राइस पे भी लेना पड़े ले लेंगे, से देने लग जाए। Sir, to install copier, how do we do that? Okay, how are you planning to, which one do you want to copy? Actually, I have one on the Legends 25K one, and the other Okay. one is Okay. No problem. I'll send you a link, make a payment there, I'll set up your copier. No problem. It's $120 US. Awesome. There's one spot here and one in that center. Yeah, I think there's one over there too. Wherever. so is it compatible with both? Yeah, it Legends works, and 35 everything. both? Yeah. But be careful with the copier. It has some bugs, so it's not 100%. Can you send me a WhatsApp and I'll reply back? एरिया क्या 650 है? 660 तक मिल रहा है। बहुत ही नहीं यार, अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं पता लगी। That you start with 20,000 balance and you start with 10,000 target round 2 में। अगर आप डिप होते हो पहले वो बनाना है। तो वो तो पहले इसमें भी यही था। अच्छा, मुझे था कि राउंड 2 में टोटल 10 बनाना है। अगर डिप हो गया है यूज किया है ना, मैंने बोला तो मैंने 8,000 पहले उसको बनाया, उसने 3,000 काटा, मैंने वो बना दिया, वो ऊपर फिर 3,000 बना के ये ऐसे ही चल रहा है मेरा। अभी कितनी अच्छी है। to make it so any money you lose you gotta। हाँ, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं बनाना है, वो बनाना है। मुझे था बस कहीं से 10 बनाना है। ना वो एवरीडे का भी पूरा करना है कंप्लीट। ठीक है, वही 10 days। 10 days, but your balance now you have to make is 2750, not 26,500, 2750 you have to make. Then you can claim 1,500 Correct. after 10 days. Yes. Sir, I sent out your number. Sure. 0694. Yeah.
रन ऑफ द डे तो सारा हो गया हुआ है 980 इधर बनने हुए हैं आज FTM और इसमें बनाएंगे अभी या तो इधर डन हो गया हुआ है सर वैसे बैठे हैं कि फंसने के लिए नहीं FTMO में बैठे हुए हैं अभी चल उधर लगे रहते हैं टारगेट सारे डन हो गए हैं 5873, right? 5873, yes. $300. No. Wrong. Are you bidding for 600 S1? S1 is done, guys. Now if we're gonna think, because look, it bounced from there, it even your high to go low, so wait for 700, or if you wanna buy, I would wait for S3. Okay. So, give me a second. This link. So just correct 0 to 190. Yeah, 119. अब स्कैल्पिंग बंद करेंगे ये FTT वाले नहीं, स्कैल्पिंग कोई नहीं बंद कर सकता. नहीं कर सकता Impossible. 3 ticks, they will say maybe take a tick, 1 full point, but it's not a big deal. 15-20 मिनट में बना के बाहर निकल जाओ हम रिकवर कैसे करने हैं कि जब 700 पे गए तो 50 लॉट फेंक के निकालना है और रात को नहीं निकला तो वहाँ से लगा के वॉशरूम गया इधर रात को 300 बना पड़ा था नहीं मैंने अपने ट्रेडे 5 पे बना लिए, पर्डिया पे बना लिए, वो बन गए. सिर्फ इशू ये है कि मेरा FTT नहीं चल रहा. IR बन गया हुआ इधर मेरा प्लस हो गया. Yeah, people started to get payouts. That's a good thing. Let me screenshot this. कर लूँ ना जैसे उधर 600 है इधर 1000 का सब जल्दी हो गया है वो रूल तोड़ देते हैं 1000 बना के 2000 बना फिर फंस जाना. Every time it comes to Midtown, station order. यहाँ से Boss, there is not a single not a single लैकेट में सैलरी है तो चल रही वही है प्रेसी कोड ओके Yeah, कल the Tradeify. लेना पड़ेगा Sir ji, first day today? First. Okay, no problem. So in about 10 minutes,
I'll start on how all of this is done. Sir, it's through, the payment is through. Yeah, no problem. Go on superareas.com. At the bottom, chat that just made a payment for the copier. Please help me set up. So they will do it for you right away. Okay. The HR, four. Okay, no problem. शेयर मारने जा रहे हो संडे and now they change it at the same time you have to downgrade and now that it's downgrade at the same rounding up Have they any desk started? Yeah, they started. Okay, okay. I'll be with you in 1 minute.
Government bank should be. 647.
This is like you get a fully driving license and all just like regular information. Yeah, then don't do right Sir, what are the bugs you're worried about? Sorry? What are the bugs you're worried Bugs is if it's for my ATM, it's not doing, it's skipping something. So, but I'll figure out why it's having.
All right, guys. Welcome to your first day of training live with us on the floor. Let me write my name. My name is Rafe, and you should take down this number, 647-228-0694. This is a WhatsApp number that's read by 4 people. If you have questions where you can't get a hold of Daniel or any subject matter that Daniel doesn't cover, I would take care. So the way this organization works is he runs the theory Saturday and Sunday, and I run the practical on how to do it. The way the floor works is from 9 to 11 is pure trading, because as you saw, and everybody's just, because this is where the volume is to making the money. This is first day. After 11, I'm here until 2 o'clock every day, 1 o'clock, 2 o'clock, Monday to Friday, and I lead you into exactly what exactly that you're looking at. What are you buying? So today is your orientation day, first day, to kind of explain you what exactly are you, why are you here? Like what exactly, so any lectures, I know all 4 of you have completed the 4 classes. I'm the person who's going to practically lead you into the market. What are you buying? What are you selling? How to buy, how to sell. And don't expect this to be all done in one day, that today you're going to hit the button and you're going to start. First, today, my job today is day 1 is to teach you what are you looking at. Because I know by the time Saturday comes and Monday comes, most of you have forgotten everything. What is a diversion, mid-band, overbought, oversold, strength. So idea is to kind of go a bit slow, and first to understand that you are a trader. You are a day trader, and I'm going to write a few things that will be helpful. All of these things every day I speak does get recorded. So if you go on superareas.com at the bottom under course material, anything Daniel says or I say, daily sessions do get recorded. So if you miss anything, you can always go back and listen to it over and over, everything again. So you don't have to worry. So if you're ever at home, weather is not in your favor, out of the country, you want to come in and listen, the whole floor is being broadcasted over Zoom and live stream that you are part of at superareas.com. So you can WhatsApp me, you can talk to me, Daniel. Generally, I don't respond to calls, I respond to messages because we have worldwide. You have a question, just send me an audio note or a text message, somebody will get back to you. Number 2, of course, daily floor is here for you to come. As more you have access to it for a few months, at least a couple of months for you to sit down and understand it, how things go, because then graduate, they go home, they start trading from anywhere in the world. Idea is not to be here for rest of your life. You should be trading anywhere in the world. You don't have to sit in front of me. I'm not going to hold your finger and buy and sell. But so at least the expectations are clear. I'm not the person who's going to manage your account. We are under very strict legal binding agreements that I cannot trade for anybody. I can't trade for my wife or my son, things like that. So to get you started, what you are doing is you're day trading. By definition, I say to everybody, you're all a trader by definition, meaning you're buying and selling every day, things like that. But here, your job is to day trade. And what is day trading? You're buying and selling something. Something like S&P 500, NASDAQ, gold, crude oil, natural gas, crude, all of those things you're buying in. And you're not physically doing it. You're buying a piece of paper, a contract, and you're saying, is the price going to go up or down? That's it. You're not involved in the actual trading, how the contracts work. So let me write something. I always start, this is gold, and I'm going to write a number, 2750. So this is, the instrument is called here gold, GC. The price is 2750.
This market is open 23 hours a day. It's not like a stock market that is open from 9 to 5 or 4 to 8, things like that, 8 to 4. Your job is to just predict, is the price going to go up or price going to go down? That's it. So the business you're in is the word called speculation. So you are going to speculate if gold price is going to go up or gold price is going to go down. S&P price, NASDAQ price, Dow price, Russell price, crude oil, you can pick whatever. The two markets, the first market that we give as a beginner, you will see something called ES. ES stands for S&P 500. Out of 4 of you, do you have any trading experience or no? Like, have you ever traded? You have traded. No problem. So I want to lead you into absolute basics, right? What is it that S&P 500 stands for? It's U.S. companies. 500 companies has an index. An index, let's say, has a price. I'm going to write a number, 5,900. You're not buying S&P physically. You're not buying even with the full price of 5,900. Your job as a day trader is you are trading something called future contracts. So this is what your job is. 23 hours a day, you're trading the value of the contract. Meaning, is S&P going to go up or down? Gold go up or down? Natural gas go up or down? And how do you do that? Is based on some analysis. So I always like to give this example of real estate. You want to buy a home, and the home in your street is $500,000. Let's say a small. Let's make it to $1 million because that's what the average price is. How would you determine the price of buying and selling based on some historical data? What was the price a year ago, a month ago? So you will do some analysis and then you will say this house price should be 800,000 or should be 1.2 million. So you are going to trade your money for a house. Same idea, S&P 500, gold, crude oil, natural gas, NASDAQ. How would you analyze this that you should go buy or sell? You don't know. Yes. So our software that you are running all these colorful, brilliant charts, is the idea is that will do the analysis for you. So that software is the state-of-the-art software. Took us like 15 years to develop until we got here. It's not something new. Each year I have a revision coming out as of last night. New update is coming out for advanced users. But that software will help you determine that action. Should I buy, should I sell? Should I go long, should I go short? So that's why you have those screens running, and Daniel's software in Lifetime teaches you over the 4 what every single thing means. What does this line mean? What does overbought mean? What is a divergence? What is a mid-band? Don't panic if this is new for you. Please, this is something somebody who's never traded before takes, I always say on the radio, about 3 months. It will take you solid 3 months if you open every day, by the way. It's not like you open today and 3 months later automatically things are going to come to your brain. Every day open this thing up and just look at it to see what's happening. Watch the news. Hey, what interest rate, inflation data, CPI data, PPI data. So number 1 is news. Learn to read the news every single day. After the news, whether you're coming here or not, still zoom in for 10 minutes, 15 minutes and watch it, because we have to teach you this new language, this new chart, this new system. So you're a trader trading futures contract. Your job is to trade 23 hours a day. You don't have to. Buffet is open. You can eat 23 hours a day.
maybe from 9 a.m. to 11 a.m. This is the most critical time in the morning where most of the volume of trading is happening. Then approximately 2 p.m. to 4 p.m. I would say 4:30 p.m. because earnings. So 9 a.m. to 11 a.m. And then if you are the late night person, the next session, good session to trade is 3 a.m. to 6 a.m. So this is where the majority of the market is moving. New York session, part 2 in the evening, and then you have the European session where they're trading. So what they're doing the same thing. One trader in the world is sitting, it's going to go up. One guy is going to say it's going to go down. So this is, nobody's losing money. Money is just changing pockets. So your job is, so as a trader, we want to be right. That the prediction we are going to do has to make sense. Is the price going up or is it going down? So how do we make that choice? With the software that you have in front of you, you have literally 9 ways to make that choice. 9 or 10 ways to make that choice. You can pick one. And the highest one, the highest accuracy is, you saw a bunch of numbers written, right? So watch that video. It's on Super Areas, is how to read those numbers. It's called areas. But before that, let's even come down and let's say I'm going to explain you. So you're doing S&P 500. You have a price in the morning, in the after 23 hours, 24 hours, you have a price. So these charts that you're watching will help you determine that you should predict if the price is going to go up or price is going to go down. Now, no software, no human, no trading is 100% in the world. It's that the moment you enter, it's going to go in. So you do have to understand there is a possibility of a risk. Risk is you think price is going to go up, but it goes down. You think price goes down, but it goes up. So there's always an opposite. Now here's the good news. You can make money in both directions. You can say, you can predict price is going down. And if it goes down $1, they'll give you $50. Who is this? Exchange. Those are the guys who actually take care of all of this. So S&P 500, when it moves $1, that's lecture 1, chapter 1 in your PDF that he explained all the ES and gold and everything else, but we'll stick to ES. So the way the price moves is this way. If it's going down, it will go down like this. 59.99. This is 58.99. Yeah. 58.99. 75. 50. 25. So $1 has 4 quarters in S&P 500. So each time ES moves, it moves by 1 tick, and 1 tick is 1 quarter. So all we have to do is be right twice in a day. Twice in a day. That'll get you $100 very easy. So there are ways you can make $100 a day, $500 a day, $1,000 a day, $5,000 a day. So if you get excited, pick a number. So at the beginning, we ask you to make $100 to $200 a day. That's a good enough number for you to begin. So how do you begin this journey? Your access starts right here, superareas.com. He mentioned it in the morning. This is your portal to everything. All the information we speak, we talk. So this should be your second home to when you want to access information. Superareas.com. You will log in. Let me log in with my account.
And let's look at, right here it says, click here to access software training videos on superareas.com. May not work on the phone, but once you log in, all Daniel's 4 lectures are recorded here. Saturday, Sunday, and then, so if you want to watch them over and over, you don't have to wait for Saturday, you can watch them over. I know they're a little bit old because this is right after COVID. We are in the process, starting next Saturday, he's going to do 4 sessions in Hindi Punjabi. So all of these lectures are going to be in Punjabi. That's according to him. So he says he's going to record the 4 videos, so much easier to understand if English is your second language. And we're going to redo the English lectures as well. So we have 6 videos that you can watch over and over. But since you have already completed those things, I want you to watch this video. It says Beginner's Guide for NinjaTrader 8.1, how to get started on the charts. So this video is 2 hours long. It goes in extreme depth on how to use your NinjaTrader. How the chart looks like. What does this mean? What does this mean? What does this mean? What is all? I go over tab by tab, 2 hours, how to go buy, how to go sell, how to put a stop loss, how to use chart trader. So just like driving a car, you got your G1 done and you are into your G2. Before you can start driving and get insurance, let's do this in a parking lot. And so the faster you can learn this software, the easier it is. Because the goal is not to hit just buy and sell and market here. The goal is to understand what exactly you're doing. Yes, the software is great. Software is going to do all the analysis. What it's going to say, this is green, buy. This is red, sell. From where? From this line, middle of the line, right? So called the mid-band. But for you to really truly understand, watch this 2-hour video, then open it up and then see, all right, how do I place an order? Because you have to understand how to place an order at the beginning. It's great. Let me pause the video. So this is a DOM called depth of market, price ladder. You have Russell running at the moment, which is fine. You can pick any market, you can pick anything, but this 2 hours is a key element on how to use NinjaTrader. Making profit is the last thing. If you don't know how to enter a trade, you're going to be always struggling. Yes, one time you will hit, and please, every morning he says, don't assume your own feelings. We are doing this based on a lot of math that's going on in the market. Math volume, math of trend, so there's like 25 equations running 24/7 to do the mathematical calculations for you. Your job is, hey, if I see this line, what does this mean? That is called a 30-20 divergence line. Yes, it's in class number 3 that you read. So you will have to understand when these red and what does that mean? Yes, tomorrow or next week you will have access to it. The newcomers, you can just press a button. It'll buy, sell, buy, sell, buy, sell based on certain things that I'm calculating for you. But still understand what is it how does it buy, sell? So I'm making a very good software. So it will make a higher high. Before the next higher high, it will automatically buy for you. And you're like, this is great. I just have to understand. I just have to just watch it and it will do the magic for you. But how does it work? You should understand the fundamentals. What exactly are you looking at? That's called a market. What does this mean? An account. What does this mean? It's a chart type. There's a number written called 15, 10, 30, 20.
So at the beginning, your day one, your job is to know what exactly that you are doing. Because let's say you go to a wedding, you sit down, hey, I got myself into trading. They're gonna ask you 5 questions. And based on those 5 questions, you will be determined if you know what you mean. So they're gonna say, all right, if somebody knows about trading, they're gonna say, so what do you trade? You have to be able to answer them. So your first thing is, I trade futures. So you should know what you trade. Because they can say there's stocks, there's options, there's CFDs, there's EFTs, there's so many, but we have to start you somewhere in this trading universe. You're just born today. Today is day one just to learn the orientation. So futures is what you trade. Second question they're going to ask you, okay, futures, this guy knows what he's talking about. What platform do you use? Because do you use TradingView? Do you use Interactive Broker? Do you use Wealthsimple? Do you use CIBC's, like different type? The platform we use is called NinjaTrader 8.1. That's the next. That's the software that's running in front of you is called NinjaTrader. Because you have to understand, if you're just gonna say I trade and you don't know these answers, you're gonna look like, hey, somebody's scamming you. Because first thing comes to mind is, hey, somebody scamming this poor guy, right? So not knowing anything about our company. Number 3. All right, what type of futures? You can say, all right, right now I'm starting to do S&P 500 futures. The next questions they will ask you is, what algorithm do you use? Or indicators, or how do you figure this out? So you can say, hey, I use super areas. So super areas is this is the soul of this software is super areas. Is how the mathematics behind all of it comes is called super areas, right? So you're trading futures, you're a day trader. So day trader. So you should know who you are. You're a day trader. You're not options trader. You're not a stock trader. You're a day trader trading futures using Ninja 8.1 using the algorithm super areas. Now the next question that they could ask you if the conversation got exciting, so who do you use as a broker? Because of course now conversation is, broker means, do you use your own money or somebody else's money, right? So we are going to put you in a funded program at the beginning. Once you learn this software, let's give yourself 30 days, 40 days, 60 days. Okay, I can buy, I can sell, I can stop loss, I can trail my order. I know what a buy limit is. If the day you understand this line on 30-20, consider yourself you're ready for trading. Okay, so don't put ever at the beginning your own money. Please, we are not going to risk our own money at all until you go through the exercise of managing money. So you can say, I trade futures using Ninja super areas and I'm funded. That puts it, what that means is you're not risking your own money. So a funded challenge will happen within 60 to, your funded cost starts at $50. So you will spend $50. The company will give you $1,500 in return. So you will never ever spend your own money until you know what this is doing. Because what will happen, you're like, I'm excited, I want to go, I have 10,000, 20,000, 100,000, million, I don't care. If you're new, we're going to put you in the funded program. We are not going to risk your money, period. Because I want you to pass a challenge. What is a challenge? You're going to put $50 and enroll in a challenge. Challenge is $1,500. If you can manage $1,500, they will know if you can manage your own money or not. Because this is your, before you put your own money, which takes about a year at us, that we say, do not put your own money into trading because there's free money in the market. We're gonna
test it with this. Because let's say you're ready and you're like, I have money, I think I can trade. We're like, just wait, give us a month, figure it out if you can manage this exam. Simple as that. So this is a great test for you. So you're a day trader trading futures using NinjaTrader 8.1, using Super Areas algorithm. So the word is algorithm, ALGO. Now the next is exchange. They could ask, but you don't have to worry, number 5. But these 4 things will make you sound intelligent about, because the first thing is you are like, hey, a lot of time people say I'm into trading and the negative connotation comes, you're going to lose money. Instantly everybody says you're going to lose money. And the people who are very arrogant, I know a lot of arrogant traders, 10 screens, watching everything. It doesn't matter. I don't care. Unless you make $1 million to $2 million a day, you're not considered a huge, because if somebody flashes too many things, because the amount of money that moves, $1 million a day is not that much. So if somebody flexes with these screens and these things, please don't take them for that, oh my God. So, and you can have the same thing. I have a guy, construction, he comes on Saturday, Jay, he trades from a phone. He doesn't need all those things. He's like, man, I can trade. So these flashy screens, these charts, everything is great. But if you don't know how to enter, none of this matters. None of this matters on buying all these fancy things. Yeah, maybe an extra, like you see a couple of guys have an attachment with a $100. So your cost is not that much in terms of doing it. So now you have a complete package. I'm Rafi. I'm day trading. I'm a day trader. My license plate outside says day trader. I'm just a trader. So I'm a day trader. I trade futures. That's what I like to do. I use NinjaTrader platform. I use Super Areas algorithm that helps me analyze. And then I don't use my own money. I use a funded program, and that's how I make my money. In funded program, now I'll give you real true examples. People who've joined us 8 months ago, 6 months ago, 9 months ago, go and check out their payouts. $20,000 a month, $30,000 a month, $40,000 a month. I have guys who come every Saturday, by the way, it's an open discussion for everybody, because we have 2 offices. We have an office at Trinity, Mississauga, not Trinity Mall, just 10 minutes from here. Every Saturday we just hold a get together. So how was your week? Let's talk in person. So every Saturday we can come, and you're welcome to come around 2 o'clock, 3 o'clock and just hang out and chill. And we exactly draw like this. Hey, if it goes like this or this. So last Saturday, 5 of us had a great conversation about developing something new, right? So we just chit chat, and you will see true traders who will show their true results. So nothing is here like I'm making money or not. So that office is open. Now the good news is that office is going to be open starting tomorrow until midnight. So anybody who's working late, you can go. We have another office at Trinity. If you go on superareas.com, at the bottom is the address of that office. So you're not alone. It's a community. We're not going to let you fail. Yes, some of you may be struggling to understand why. If you just wait for certain things to happen, meaning wait for the colors to change, wait for the right price to come. The rest of the thing the software is going to do for you, 100%. And then we give you some predictions early on in the morning that, hey, if this happens, this should happen. If this happens, this should happen. So along with it, so my request to you today is, whenever you get a chance, it's not, you have bought the license, start to watch some of the videos that we post online, right? We have 2,000 hours worth of archive videos. Like seminars every Saturday I hold these seminars, 5 hours minimum. The longest I've done is 8 hours. I will not get tired. You will get tired just sitting there. That's how the way my energy is. And
I don't know what it is. It's a curse that I have that much energy. It's just the way I look at the market, NASDAQ. It's like NASDAQ is running in my veins. Then. That's so it's because to be honest, so my energy. This is my lifeline. I live and breathe the trading, options, stocks, cryptocurrencies. But as a beginner, please don't panic. Panic means if you don't understand something, don't worry about it. It's okay. It takes a little bit of a time. All of this will make sense. I'll tell you is, it took me 2 years, even though I've been trading for 20 years, let's say, pick a number. And I traded stocks and options and some crypto. So 3 years ago, I heard Daniel on the radio. And he's like, oh, we do day trading. I was not a day trader. You trade options and stocks for long term. And I was not introduced to futures trading. I heard Daniel and I came and I took the seminar. I sat where that gentleman is sitting. I sat just like that. And I took the course. And I'm like, and I fell in love with futures. Why? Man, I was done in 10 minutes. Because, okay, in options and stocks, you're waiting, and you're stressed. You're like, hey, what could happen? I hope my stock goes up. We were still doing trading. In futures, if this line goes from here to here, you make $300. If this line goes here to here, you make $500. So when I got involved in trading futures, I'm like, there is no better market. Yes, very risky, very volatile. So my story was, I took Daniel's lectures back and forth, and I'm like, I am going to learn futures. I don't care how long it takes. I still worked in full time. I worked for Verizon. I'm a software developer by profession. And then I'm like, I gotta pay attention to how future. Small triggers came to me after a year. These two lines that are going, because I kept paying attention to it. I'm like, what is happening? I don't care about this. नहीं देखिए मेरी बात ES में small triggers momentum lose कर देते हैं ना, तो वहाँ 13 पॉइंट पे करते हैं, right? So yeah, 13 पॉइंट पे बस momentum lose कर देते हैं. But so every single line has a value. You don't have to learn it all. I'm just saying, at the beginning, I tell everybody stick to one thing. Green, you're gonna buy. You're gonna predict prices going up. Red, you're gonna sell. That's it. There's no magic. I know I teach 10 things, he teaches one thing. Actually 2. He teaches areas and mid-band. He's like, man, forget about teaching 4.75 and 9.30. So, because what I want is, my energy is like, what I can clearly see why each line is doing what it is doing. There's a math behind it. For advanced users, you can learn it. My lectures are there. For beginners, you don't have to. You're like, man, my goal is to make $200 a day. Wait for an area, sell, make 200, exit. So there's different levels of people. Some are doing it for money. Some are doing it to learn the whole industry, and everybody in between. So your job today is to go and watch these videos. Now if you get questions, because the problem is I can't teach you this whole Ninja Trader in 10 minutes, 15 minutes. It takes, like, just to open it up. Now I will give you a very basic buy and sell definition. I will open this Ninja Trader. I will connect. And I will just look at this thing. So absolute basic lecture is buying and selling, how to buy, how to sell. That video explains it in extreme detail on how to okay. This is called the price ladder, or a movement. So as you see, the yellow is your current price. So the current price of S&P 500, so ES, is
5864.75. That's the price. Your job is, will it go up or will it go down? If it goes up, you make it. If it goes up $1, you make $50. If it goes down $1, you lose $50. If you're but you can make money going down as well. So you are watching this and you're like, all right, price is moving up and down, up and down, up and down, no problem. So computer says you want to buy because everything is green. You should be buying. I'm not looking at any chart or anything at all. I'm just going to explain you basic depth of market. So instrument is your. All of this is in that video, 2.5 hours. Instrument is your. What are you buying and selling? You're buying gold. You're buying natural gas, Nasdaq, ES, Russell, Dow, copper, pork belly. You can even buy weather, But we're gonna stick to one thing, S&P 500. Next is important is quantity. How many contracts? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100. Stick to one, please. Keep your quantity to one. Number 3, big account. Are you playing demo account, funded account, your own account, broker account? So account tells you that all of you have a demo account. So when you signed up this program, Daniel installed Ninja and they gave you a Ninja Trader 2-week demo. That demo will expire in exactly 2 weeks. Just go with an email, brand new email, sign up again, get a new demo. So keep getting a demo over and over and over and over. It doesn't matter until you are ready. So your demo, if you log in and you get an alert called delayed, this is the alert you will come. You are delayed. That means your demo is expired. So watch out for this message. When you type in your username, password, click simulation, and you see delayed, that means your demo is expired. You can go to Ninja Trader website again, and you can make your another demo and then sign using that. So some people have 4 demos, 5 before they get ready. So if you ever see this message, when you sign into Ninja Trader, that means your demo is expired. So when you log in, right now you would be logging into your demo account. Forget about ATM now, so only 3 things to watch. Quantity, instrument, and account. And stick to ES. Don't worry about Nasdaq, gold, Russell, any of that, but this is how your environment is. I'll give you a very, very basic lesson today. Since I know a lot of this is still overwhelming for day 1. How do you buy? This is again all in the video. If you are looking at the price, 58.64, as the theory has told you, your mid-band is, let's say at 58.62. Your mid-band is there. You would take your mouse, that's why mouse is important. You would go in front of it and left click. As you see, I have placed, it says LMT. That is called a limit order. Limit order means market is screaming up and down, but this is the bidding price is happening. You decide you will buy this contract at 58.63. That's how you place an order. You're not in a trade yet, remember. By placing a limit order means you just have put an order in that, hey, I would like to buy this property. It's like you bidding. Somebody has a home for sale for $1 million. So this is $1 million. You decide, no, I'm going to give them, so let's say $586,000 is the house price and your price is 63. This is your offer that you are going to buy something at this. So the moment this yellow price comes in front of your ladder price, it will pick that order. So right now I'm not in a trade at all. All I have done is I have offered a price that I would like to buy one quantity of S&P 500 for 58.63.25. That's where my mid band is. I'm not looking at mid band anyway, but I'm just showing that this is my price. So 2 things will happen right now. When this gets picked up,
When this order is, look, there's no order taking place. I'm not long, I'm not short, I'm not buying, I'm not selling. I'm just waiting for it, the price to get to me. I'm not paying any commission fees yet. Nothing has happened. All I have done is place something called a limit order. A limit order means your offer to buy or sell at a certain price. You haven't executed an order. So you have bought it. Now, when the price comes, let's now actually take an order. I will put a limit order very close. It gets picked up. Let's go cancel. No charge happened. I'll put a limit order here. There you go. My order has been picked up now. I'm now in a trade. I clicked on the buy side, so this became green. So now I took a buy that already this is my price. 58, 66.75 is my price that I placed an order. It reflects Color, which is it will reflect it as a brown. So now two things are happening. If the price in fact goes up, I will make money. If, look, already have made $25 because I entered at 65.75, price has gone to 66.25. Look, I've made $25. Done. So two things will happen from this point. Either price will go up or will go down. Only two things. What I will do is on this side. So wherever you start your trade, you have to exit on the opposite side. Either in profit or loss, simple. So you have placed an order. I placed an order, number one. It picked my order, number two. Now I'm going to exit the order because I will either exit in profit or loss. So two ways to do it. Look, I've already made $50, $62. I will say when the price goes here, please exit me out, and I'm done, and I've made $75. That's how easy. I didn't look at a chart. I can sense the tick. This is what happens after 3 years of watching futures. You don't even have to look at the chart, and you can feel, should I go buy or sell? Well, by the way, I'm watching his chart on the other side. Just kidding. I'm S&P, so I know it's going up. So this is, I took a one trade now. I placed a buy, price moved up, I exited, and I made $75 US by one click in front of you. No magic, no nothing. You can do this 3, 4, 5, 10 times, and $50 a tick point, 200 a day, 500 a day, 1,000 a day. It's not a big deal. I have people, the fastest record on our floor is somebody is $400,000 in 90 minutes. I know, it sounds a lot, but it's not. I'm still not impressed because there's always a bigger guy in the world, right? 20 accounts with a copier, did 120,000 times 20, 400,000. He's like, I'm done. So there are people who are that precise in terms of an entry where they will take a bigger risk and bigger reward. So now let's do this. Let's turn this quantity to 5 to get you guys excited a little bit. Will not happen in real life. So I have now placed a buy limit here. At what? 58.66. But if you see there's a 5 written beside it, that means I'm entering with 5 lot. And the moment it's going to go up and down, and it's going to pick me up the moment because I'm entering at 58.66. So I have placed an order of 5 lots, 5 quantity that I would like to be why I picked 5 for you guys. Please, please, please stick to 1 or 2 unless you know how to trade. Because what happens is people play with this number at the beginning and their mind starts to register, oh, I gotta play with 10 or 5. Please stick with 1. Go small. You can anytime raise this to 100. What you need to know how much money you need in the account. The moment you start going above 5, your risk becomes very aggressive. Meaning that, yes, your risk and reward is to, so I never ever in life, real life too, if I have $100,000, I start with 2. So 50,000, there you go. My 5 orders got picked up.
Now everything is multiplied by 5. My losses are multiplied by 5. My profits are multiplied by 5. Because now the price of $1 becomes $250. Because now it's 50 times 5, right? And I'm at 0. Two things will happen. Either I will make money or I will lose money, right? So what I will decide is, this is something called the stop loss. And that happens with the middle button. So I will go and say, I entered at 66. If the price goes to 64, please exit me. I don't want to take more loss than this, than 2 points. And the same time I will say, if the price goes to 67, I would like to exit my position. So two things are happening. I placed an order of 5 lots. I have my limit order to exit in profit. I have my stop loss to exit in a loss. So the moment you take a trade, buy or sell, you always have to look, I'm already going up because the market seems to be going up. So I've entered at 66. I only want 1 point. So when the moment price goes to 1 point, I will exit. Then at the bottom, I said I only want to lose 2 points. And there you go. I'm about to lose 2 points in this direction. Let's see which way it will happen from 66. And there you go. So my order has been completed in a loss. So whether you do buy, whether you do sell, always put your stop loss in. Because what could happen one day, everything is green and you forgot to see the news. Oh my God, I forgot it's 10:30. They're going to speak about CPI or PPI or inflation. And then even the charts were saying buy and you were buying and you forgot to put a stop loss. And instantly the market shot down 500 points in NASDAQ and then killed your account. So every trade, I don't care how many years you've been experiencing, you have to plan your trade with the 4 things. I like to do 3 for beginners. Let's do 3. Know your entry, meaning where you're going to enter. Mid-band, area, overbought, oversold, divergence, gap trade, doesn't matter. So you know you should define your entry. Number 2, how much TP you're going to take. It's called in industry profit, take profit. 1 point, 2 points, 4 ticks, 8 ticks, 20 ticks, trailing, doesn't matter. So you should know your TP. And the last thing is stop loss. If you don't know your stop loss, you're not going to be successful in this industry at all. You can be struggling for 1,000 years. 1,000 years, NASDAQ will win. S&P will win. Gold will win. Because a person who doesn't know their stop loss doesn't know how to trade. That's just the way it is. I've been trading so long. Certain days you think price will come, it doesn't come, and then you have to exit with the loss. It's a normal part of the business. But every single trade, your mind should tell you, where is my stop loss? So it's in reverse. You should do number 3 as a number 1. At which point, on last Friday, this Friday, me and him were sitting and we enter a trade. And we expect the price to go down. It doesn't. It's okay, no problem. The computer is wrong too, because too much. Why? We'll have a reason. Tesla stock went skyrocket in one night. $50 one day, $11 the next day. That's almost 30% stock value went up. And then we had to cut a loss. We're like, man, today it's not working. We come back today. He recovered half of it same day. But every single person must know, आप लोग तीनों लकी थे कि वो एवरेज पूरी हो गई. Like, एवरेज जल्दी की थी लेकिन चलो, it's okay. But मैं 26 पे था लेकिन कुछ लोग आप तो 84 पे बैठे थे और वहाँ पर भी आ गई प्राइस. So in average, बस अपनी एवरेज भी प्लान करनी है. आपका नंबर 4 भी आता है कि कब एवरेज करनी है, करीब नहीं. Right? So I had a loss on Tradeify on Friday. I had a loss on Purdy on Friday. I recovered some of it today. I said no problem. As long as your account is alive, you can always, and I always like to say it with win. When you get sick, do you wait until you die? No, you first, you're like, worst
yeah, I think one of the worst diseases is cancer. They will cut an arm off or leg off, but don't die. If you let your account drain, because you know what happens when you don't put a stop loss? You will see 150 negative, then you will see one time minus 900 negative. And you were like, man, I should have exited at 150 negative because Daniel said when the color changes, hit close. And I didn't close. So, when green changes to magenta changes to green, close your trade, right? If mid-band fails, close your trade. And some people I know don't close the trade. They're like, aa jayegi price, aa jayegi, phir wo bechara account hi faut ho jata hai, right? So, that's where you have to, biggest thing in trading, I swear to God, I've been trading for 20 years. It has nothing to do with charts, nothing to do with price, it is everything to do with your emotions. Everything. If I were to weigh emotions in trading, 99% is emotion, 1% is trading. Because of course, this price in the morning, we have a price for you. Let's look at a price. There is a number. Super areas, actually it's not open, but computer said if it got to 655, sell. Your emotions are gonna say, what if price doesn't come there? Why should I sell? If you say, should I enter too early, too late, all of those things, just follow what the computer is telling you. Computer is far more intelligent than us. We are more emotional, computer is not. That's where we are building tools to automate the trading. Automatically SL, automatically TP, automatically buy and sell, and then you're like done. As a human, we make mistakes. Mistakes overbought, meaning overtrade, right? So anyway, this is my little half an hour, 45 minutes intro. Welcome on board. Don't panic. Every single one of you will make money, but learn the whole system. And how you can assess yourself under the study, there is this PDF. This tells you, let me open this up. This is a chart I created, and I was very, very lucky in a sense that when I took this picture, screenshot, every possible thing we can teach you is happening here. It's just one of those days that, I just took a picture and then I went through, I'm like, I don't need to really create anything else. The day you will understand every line is the day you will start. Then you can say you can trade with your own money. Until then, go with funded account, meaning, what are these large triggers twisting going in the other direction? What does it mean? Like it means trend is about to change. These divergent lines, the gap trade right here at the bottom, all of these things make sense. They will slowly make sense. So pay attention to it, watch videos over and over and over and over. I swear at the beginning, Daniel gave me a good trick. Before I went to sleep, I used to put his lectures on and try to sleep. Nothing would make sense because, hey, what is large triggers? In futures trading, you got to pay attention, not in options in stock because you're looking at different analysis. And I memorized everything. It took me about 6 months, but by the time you're in your 3rd month, you should attempt the exam, meaning the challenge. Some people do this in 14 days, some 60 days, some 30 days, but at least 1 month enough to understand buy, sell, that, hey, I understand how to buy, how to sell, how to put a stop loss, how to trail my profit, how to trail my losses, lock my losses. What is a higher high, higher low, lower high? I know it's a lot to absorb, but remember, it took us 9 months to be born, and it took me 45 years to be here, right? So I always like to give this example. We are not just created in a day, so all of this will take time for you to absorb in your brain, and yes, it will come, and one day it will the light bulb will go on, and you'll figure out, hey, what the heck was I missing? Large triggers, small triggers, divergence.
low of the bar, top of the bar. That's the magic. So again, congratulations on choosing this wonderful career. This is, it pays my bills, it pays employees. We have 12 employees, pays the bill of that. Pays like a lot of families who couldn't afford, what was it, ideas to $100 to $200 a day they want to make. There's no faster way than to do this. And if you work from 9 to 11 every day, there will be points will you be able to make at least $200 to $300 a day. Don't overtrade. People sit. I myself too, still today, I would be done my target. I'm like, let's go for that one more trade. And then market corrects and I have a problem. So watch that video, please. Thank you. Sorry? Oh, no. Experience, man, just keeps every Saturday. So it's... इंटरव्यू दे रहे थे वो होस्ट को हाँ पूरी व्याख्या कर दिया वो उस माहौल का वो डिफरेंट था. इट्स ओके. मेरा एफटीटी चल जाए, मैं इसमें बैठा हूँ. आपका पूरी बंद किया हुआ है उन्होंने. नहीं बस प्रॉफिट आने वाला है ना, उनको पता है 4 दिन में इसने बना के ले लेना है. सब आपका भी किसी कईयों का होल्ड किया होगा इन्होंने. मेरा ना बंद कर दो, मेरा डेली 600 हो जाता है. तेरे 10 बजे तक बना के बंद कर दो. और लवांगे पैसे देंगे ना, इन्हों के पैसे ना ले लेने. 3000 में करे थोड़ा लेके जाना. इन्हों ने तुम्हारे इतनी. Okay, I got the request. They did everything for you, right? Still going on, sir. Actually, they gave me a notification to send an email to. Okay, give me a second. Yeah. Give me 1 second. I'm just waiting for Legends to announce it officially there because I have few people who have passed Legends. Legends का वो आपने ट्राई किया कुछ उसका अगला? ठीक है, दोबारा स्टार्ट. रिफ्रेश कर दिया आपका? क्या बना रहे ज़्यादा नया लिया? 300 बन जाए बहुत है. 200 भी ठीक है. यार एवरी डे आप पास कर सकते हो. एक्सपेक्टेड हाई से नैस्डैक 4 लॉट से फेंक दो, रोज पास हो जाओगे. एपेक्स वाला सो इधर एफटीएमओ में यहाँ बैठे बना दिया. Yes. तो वो 9:30 बजे बना के बंद कर दिया हुआ 15 मिनट में. इतना स्विमिंग नीचे आया फिर ऊपर गया, बस बन गया वैसे. अभी बैठा हुआ ट्रेंड बने जैसे मार्केट गिराए या बढ़ाए, कुछ एक तरफ करें. नहीं हो गया है ना. हो गया आईडी हो गया. मेरा ख्याल है कि यहाँ से बाई ले लेते नीचे से. नहीं क्या प्राइस है? 541. हाँ 540 530 अभी नहीं बन रहा ना कुछ भी. 500 से नीचे मैं नहीं जा रहा क्योंकि देखें वो 510 वाला तो एरिया हो गया ना. नहीं 516 से. हाँ सो एरिया तो डन है जी. सर अगर आपने ये नहीं लिया तो निकल गए. हाँ क्योंकि 510 लिखा हुआ था, 516 से चली गई ना. 516 से. जी सर. केड़ा? हाँ इधर आ जाओ. जब एरिया आए इसमें ना मुझे डाउट है मेरे ना ट्रेडो वेट में ना 2 अकाउंट थे, पता नहीं उड़ गया क्या हुआ. देखें पहले देखें. ओके इसमें ना नहीं कौन से वाले लेजेंड्स में? नहीं सर एपेक्स में ना ये आपने इसको हटाओ. एपेक्स में ना ये 32 है ना 31 भी था मेरा अकाउंट. नहीं आपने एक पीए जो कर लिया होगा. नहीं पीए नहीं हुआ सर. ये पीए चले पहले एपेक्स की वेबसाइट पे जाते हैं. पहले ये देखें ईए नहीं ईए चार्ट्स पे देखना होता है. क्लिक करें ईए चार्ट्स. अच्छा डेड हो गया. लेट्स लॉग इन टू ईए चार्ट्स. तो ये बता देता है आपके पास सिर्फ एक है 32. उसको डेड हो गया क्या हुआ? निकल गया या उसको जरा देख सकते हैं हुआ क्या? मुझे लग रहा है 2 थे मेरे पास परसों. नहीं अभी सिर्फ एक है 32. उसको हुआ क्या कुछ पता लग सकता है? अभी डैशबोर्ड में देखें. हाँ उड़ गया. नहीं आपके 2 अकाउंट थे, मैं कर रहा था काम वो आज. नहीं आपके पास एक लाइफ टाइम एक पीए ये है, एक 50 2 50 हैं और ये जो है ना एक आपके पास 50,000 वाले 2 हैं.
एक 32 और एक 31, ठीक 31 का है। है, चला गया, ड्रा डाउन हिट हो गया, हो गया। मैंने किया ही कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है वो पता नहीं ऐसा क्या होगा, कुछ ट्रेड लगी रहेगी। हाँ, ये वाला 31 चला गया, ये पता लग सकता है कब गया ये? नहीं लग सकता। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। ठीक है। और सर एक ना उसमें वो जो ट्रेडोवेट की वेबसाइट में ना वो ये इसको सिंक कर दो, ये देखिए। उसमें सिर्फ लेजेंड ही आ रहा है। नहीं नहीं, 1 बाय 1 चलेगा ना। चलें जाएं सुपर एरियाज पे, ट्रेडोवेट पे जाके लॉगिन करते हैं। ट्रेडोवेट कर लो, उसमें भरा हुआ सब कुछ पासवर्ड ट्रेडोवेट। अब ये लेजेंड्स का है, ये कैसे पता आपको? क्योंकि मुझे यहाँ लिखा ना, ये जनरली ये लेजेंड जो आप, अगर आपने एपेक्स से देखना है ना, तो एपेक्स से ये यूज़र नेम निकालना है। तो ट्रेडोवेट क्या करता है, वो विंडो है, वो मिडल मैन है, वो या एपेक्स पे जाएगी या दोनों नहीं जा सकते एक वक्त। दोनों को अलग अलग एक्सेस कैसे? नहीं नहीं, फिर पहले एक में यूज़र लॉगिन करें फिर दूसरे में। तो ये देखें, ये देखें ना, ये कॉपी किया, ये मैं इधर चला गया, इधर ये एपेक्स है। अब मैं एपेक्स वाले में आ गया हूँ, तो अब मैं लॉगिन करूँगा ना, तो ये आपका एपेक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा लॉग आउट, और अब आप करेंगे लेजेंड्स में, तो अब आप आगे लेजेंड्स। लेजेंड कहाँ से सेलेक्ट किया आपने? नहीं नहीं, मैंने लेजेंड सिर्फ आपका यूज़र नेम सेलेक्ट किया। सॉरी, नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, आप 100 दफ़ा पूछें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखें आपके ईमेल से, हाँ, तो ये लेजेंड्स वाला है। ये लेजेंड वाला है। तो जब मैंने एपेक्स करना है तो मैं एपेक्स वाला क्लिक करूँ। अच्छा ठीक है सर। ये तो हो गया सर। मैं एक ना ये जो FTT का अकाउंट है, इन्होंने कुछ डेली लॉस का कुछ दिया बिल्कुल ना सर, बनाया? हाँ, मैंने कल रात वीडियो पूरी अपलोड की है। आपका रैली है या GT है? जरा इसको देखो, मेरा ओढ़ तो नहीं है? नहीं नहीं हाँ जी नहीं, हाँ जी, बड़ा अकाउंट बड़ा तो है यार, कोई घाटा घूटा? नहीं नहीं, घाटे घोटे का मसला नहीं है। ये देखें ना, ये मेरा अकाउंट उड़ तो नहीं गया? नहीं नहीं, आपका पहले आप कह रहे थे ना 7500 रोज उड़ा दो। नहीं, 7500 रोज नहीं उड़ाना, टोटल उड़ाए तो नहीं, आपने एक दिन में उड़ा दो आपने कहा था। तो फिर खत्म जो हो जाएगा। नहीं वो आपको डेली नहीं, कोई डेली का लॉस नहीं है। नहीं कर लेना। नहीं 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 नहीं, देखें आपने अब रूल क्या है, मैं आपको इधर बता देता हूँ क्विकली। आप बैठे, यही क्वेश्चन है, मैं इसको, हाँ जी, और क्वेश्चन और है। ये एक चीज़ मुझे ये बताएं कि ये देखो इसको, इसमें ये है कि अगर मैं इसको आप एक फेवर करो, रिदमिक छोड़ो, नाइट्रो पे आओ। सर इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, हाँ। नाइट्रो पे भी आया था हूँ। इसमें ये है कि जैसे ना इसको सर कन्फिगर किया है, इस 4 का क्या मतलब है? मैंने सोचा कि 4 लॉट नहीं नहीं, 4 लॉट है ये, पर वो आता है 1 लॉट है उसमें। ये क्या चक्कर है? मैं एक सेकंड मैं जब इसको ट्रेड करते हैं वो प्राइस ऊपर नीचे। सॉरी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ जी हाँ जी, ये जो ट्रेड कॉपी है, हाँ, 119 119, हाँ, वन टाइम। तो उसको, हाँ, मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। हाँ नहीं, एक आध दिन में करता ठीक है। ट्रेड कॉपी है। जिनको ट्रेड आती है उनके लिए, उनको पता है कि ट्रेड लेनी है। मैंने 6 अकाउंट ये वाले पूरा किसी में 25 बहुत सारे पैसे थे, वो ट्रेड यूज़ करके सारे उड़ा दिए। ट्रेड होती है, जिसको लेना है, जिसको ट्रेड आती है, कहाँ से पकड़नी है। ये कल ना कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो FTT दे पाई सी है ना, FTT ने कल वीडियो पाई कि इसने है ना, कोई और बंदे ने, वो ये कही जाए कि तुसी ना 5% तो ज़्यादा लूज नहीं कर सकते। 7500 ਦਾ 5%, $375 ਬਣਾਣੇ। नहीं लूज करने नहीं कह चीज़ तो लूज नहीं कर सकते तुसी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 6000 ਘਾਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1200 ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1200 ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫੰਡਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ 10-15 ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ 5 ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦੋ, 5 ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਲੋਟਣਾ ਪੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ, मैं क्या इन्हें माड़े जे लौट वाले पीछे गया थे। सॉरी नहीं मैं कहना देखें, अब मुझे इसकी ये वो क्वांटिटी स्टार्ट करेगा, इसकी क्वांटिटी 1 कर देना और उधर से फोन कर। नहीं ये 4 किया ना, तो 4 लौट लगने चाहिए। नहीं लगने, लेकिन बाहर जितने लॉट लगाएंगे उस वो टेक केयर करेगा ना। यहाँ 1 लॉट लगा रहे हो, हाँ यहाँ भी 4 करना, यहाँ पर भी 4 करेंगे। अच्छा ठीक है। आप क्या नाइट्रो में यार नाइट्रो का प्रोग्राम बहुत आसान है। इतना छोटी छोटी दिखते नहीं नहीं नाइट्रो कौन यूज़ करता है? नाइट्रो आप वो टिकटॉक वीडियो मैंने कल देखी है सर, वो बहुत छोटा छोटा दिखते ही नहीं है। कहाँ टिकटॉक पे थोड़ी देखना है, मेरा तो उस पर देखना है यार। यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब पे तो देखिए सर मैंने। अच्छा वो एक्चुअली पर देखिए फ़ोन पे वो देखते ही नहीं उसमें क्या कर रहे हो आप। फुल पे देख लेना फ़ोन पे तो क्या। चलो मैं इस एक बार वो ट्राई करता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्योंकि नाइट्रो का फ़ायदा पता क्या है, जो मैं पहले आपको क्विकली वो आपका FTT का रूल बता देता हूँ। आप बैठें, वो मैं समझ गया जी, वो चक्कर नहीं है। वो किसी ने ना वो गलत डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो कह रहा था कि 7500 का 5% 370% बनाना है। यस वो कह रहा है नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया। और 2.5% वो ये कहता है कि अगर 5% लूज कर लिया ना आपने आपका अकाउंट। नहीं 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 चाहे 7500 आज ही कर दो। वो ये कह रहा है कि 187 से कम लूज किया ना तो वो काउंट नहीं होगा। यस वो मैं समझ गया आपकी बात, उस वक्त पता मैं सर ठीक है, उसका वो चीज़ क्लियर है। और अच्छा सर एक चीज़ और ये बताएं कि सर इसका मुझे कुछ नहीं पता है, आपने आर ट्रेडर में यूज़ नहीं करता, मैं नाइट्रो यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताऊँ क्या करता हूँ मैं, आप तो बोर्ड में समझा दो। और मैं भी बता रहा हूँ ना, इतना आसान है। ये नाइट्रो खोला, हाँ जी नाइट्रो राइट, I put a price, let's say price आ गई 20,600, I did a sell, right? In Nitro, what it does it makes a line right here. Okay, this is your price, right? It puts a small little window called LMT. Actually, I'm doing a sell, SL and TP. So the moment I pick an order for sell, it makes a small box. How much TP? And it makes a line right here, right? All I have to do is, what I do is a profit started, right? Profit started. I just take this drag and I drag it down here. As I see more profit, I keep dragging my stop loss. That's it. There is no brackets, there is no trailing, because I know if it keeps going, I will keep trailing myself manually. Just drag that line down. If I'm in a long, 26,600. Yes. नहीं लेकिन वही वाली बात तो कह रहा हूँ, नाइट्रो बहुत आसान है, piece of cake. I think you use Nitro? No, Redmi. No. But somebody here uses Nitro. कैंडल भी साथ आ रही है ना? Sir, this copier is one time fee only. Yeah, this copier? Yeah, one time. Yeah. They're still waiting for the people to get an add-on into my Ninja Replicanto. Yeah, it's done. No, I think the processing is done. I think it's Ninja people has to do this. No. Give me your AnyDesk, I will do it. Are they still connected? No, they just went away. They're just looking for. Restart your Ninja. These are So I think our R2, S2 is done, right? S2 is done. It went as low as 516. 1556 रोज वो मुझे उसने बकायदा खोल के दे दिया।
नहीं, मैंने कहा कि एनी अपडेट, मैंने कहा यार ट्रेड नहीं कर पा रहा, ट्रेड नहीं, नो कैन नॉट ट्रेड, साथ यूजर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेड। नहीं या सो देखिए बाकायदा मुझे ये मैसेज आ रहा है, यूजर इज नॉट एंटाइटल्ड। हाँ अभी तक मैंने कहा है कि क्या हो रहा है यार, आपका बंद किया हुआ है उधर से, पता है ना इनको पैसे देने पड़ेंगे इस आदमी ने जोड़ बनाया बिजनेसमैन है सर। लेकिन व्हाई मी, आई एम द पर्सन हु इज सेंडिंग देम कस्टमर्स। मार्केट बहुत स्लो जा रही है, अगर आप उसी करंट मार्केट Still not showing. Okay, no, go to new and then Flowbot you don't see? Okay, give me a second. 1311269351. Sorry. 13. No, they did not import. Yeah, it's done. Flowbot replicant, it's done. It's all done. Yeah. So now let me open. While I'm there, I'll show you what it is. So this is a copier window, right? So it says select your instrument. So let's say MNQ. It says pick a leader account and then pick a follower account, and that's it. And it will show two windows. Yes. So whichever you tag, let's do a test here. So let's do NQ, and I would say SIM 101 is a leader, and SIM 1, 2, 3, 4 is a follower, right? So let's go NQ and SIM 101, and if I do a sell here, so let's do a sell here. I sold it, and let's watch these positions. You see, all of them are doing the same process. So basically we will see only the leader account, but other accounts. Yeah, they're sitting in the position window. So just keep an eye on the position window. Exactly. There you go. No. These are them. सिर्फ इस दुनिया में 3 बंदे हैं जिनके एनी डेस्क हॉल्ट ही हो जाता है, पता नहीं क्या। 1 नेक्स्ट टाइम शायद आपसे करवाऊं हॉट स्पॉट, पता नहीं आप एक्सेप्ट करें। अब सब पैसे बने हैं 1100, मैं अब वेट ही कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाए, कर नहीं रही अब गवर्नमेंट 10-20 पॉइंट की है बस। अरे इसका रूल सही है सर, 600 बन गया, वर्दी कर दो, दोबारा पंगा लो ही ना। नहीं आप इसमें लॉग इन करें ना। So you log in right here, training videos. It's all there. YouTube का जो Yeah. Thank you. No. So when you're uploading in the new ATMs, today you're uploading? No, I got a test to see how, because with the new version which I was trailing, it's not picking a stop loss, and so hopefully tomorrow. I want to try the other ones. Yes. I will. ले जा रहे हैं सुपर मार्केट में, फिर ले जाएंगे 500 How long is the operation? ले जाएगा वो। I'm done. Yeah. So you should be normal blood glucose normal. हाँ blood glucose normal. और वो कुछ देखा है कितने में चेक करेंगे, HB1 से चेक करते हैं। अगर आप मेंटेन स्टेबल हो ना, ओके सर, थैंक यू। लिया हुआ ट्रेड नहीं कुछ भी नहीं बन गया अभी, नहीं मैं तो अभी थोड़ा मैं रेस्ट में नहीं बड़ा लॉट फेंकना है। वही मैं ही देख रहा था, एक बार ही आ जाए। हाँ क्योंकि 50 लॉट फेंकूंगा। 20 नहीं मेरा बना हुआ है 50। नहीं मेरा स्टेज 2 है ना। अगस्त ड्रॉप करके आगे देखते हैं, FTM में
बड़े लोड ही है। नहीं, लेकिन मैंने जो फ्राइडे रिकवर करना है ना, तो मेरे पास अभी भी 10 की जगह बहुत गैप पड़ा है, लेकिन उसको मैं जल्दी ख़त्म करना है। पहले तो अब मुझे बताया उन्होंने कि पिछला लॉस रिकवर करना है। पिछला लॉस मेरा 3000 था उस दिन, मैंने करके ऊपर बना दिया हुआ है, बिल्कुल लॉस तो रिकवर हो गया ठीक है, डेमो में। रोज ब्लॉग भी बन जाएंगे। तो हमने क्या करना है? लेजेंड्स लेजेंड का अकाउंट है, हाँ। कनेक्ट ही नहीं हो पाता, अदर मार्केट दैट हैज टू बी अपडेटेड। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कराना फिक्स कराना वो चार्ज उनको पता है आपका फिक्स हो गया। आप जो बता रहे थे दिस मॉर्निंग का, अब से जो एरिया फिर हम लोग कहाँ से देखेंगे? superareas.com से, तो वहीं से देखेंगे आप एरिया। लेकिन आज तो स्ट्रगल ही चल रहा, मेरा तो पता नहीं। नहीं, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं आके बताएंगे किसी को, जैसे जैसे फोटो खींचने का यहाँ सामने ये लाइव दिखता है ना सबको, फिर वही जो लाइव देख लेता है उसको दिखता है, लाइव बंद कर दिया। अच्छा, लाइव जो अनाउंस नहीं, सब कुछ चलेगा। मैं भी बोलूँगा, वो भी बोलेंगे। एरियाज के नंबर आपके कंप्यूटर पे आएंगे फॉर यू, हाँ ओके। बस that's it। तो आपने देखने, अब आपको नहीं पता कि आपके स्क्रीन नहीं लगाना, स्क्रीन पे नहीं लगाना। जैसे सुबह जो देख रहा है वो हाँ। फोटो खींच लेता है, क्योंकि वो तो रियल नंबर्स है ना, सारों को जा रहे हैं। अब आपके नंबर अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेड करेंगे तो नहीं आपको नहीं, देखिए हमने आपका डैमेज नहीं करना, हमने आपके डिफरेंस रखेंगे एक दो प्राइस में। क्या पता वो एक्सपेक्टेड हाई हो और गोल्ड हो, क्या पता वो फॉरेक्स का 1 सेंट हो, क्या पता। अब सिर्फ फर्क देखिए, मेजोरिटी तो हमने आपको ट्रेड भी तो करवाना है ना। पहले तो उनको देखना है कि सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज कि आप एक ग्रुप को लीड कर रही हैं, ठीक है, आपके पास 100 बंदा है, जहाँ एरिया जा रहा है, टेलीग्राम में आप पेज देते हैं कि यहाँ से बाय सेल करो। मैं भी उस ग्रुप में बैठा हूँ, मुझे भी पता है। अब हमें ये नहीं, अब सारों के एरिया सेम है ना, वो एरिया आ जाते हैं, हम कहते हैं यार अब मुझे नहीं पता इस 12,000 में से किसने निकाले, क्योंकि कोई यहाँ से मेन एरिया ले रहा। अब मैं उस ग्रुप में बैठा हूँ, अब जो एरिया स्टार्टिंग टुमारो आएंगे, मुझे होगा चलो यार इस बैच को ट्राई किया, यहाँ से नहीं है, इस 1000 को ट्राई किया, यहाँ से नहीं है, इस 1000 को ट्राई किया, यहाँ से नहीं। तो 10-15 दिनों में वो नैरो होता जाएगा ना, नैरो। फिर एक दिन वो आएगा कि मुझे पता लगे एग्जैक्टली ये बंदा एरिया दे रहा है या ये ग्रुप एरिया दे रहा है। अभी हमें 5 पे शक है 12,000 रुपये, क्योंकि आज तो वो बंदा तो लाइव बैठा था, वो आगे से कह रहा था 65 से सेल करो, वो कह रहा है यार कम ऑन यार ऐसे तो ना करो, मैं यहाँ से हाँ। तो ठीक है, आप अपना ट्रेड करवाएं, हमारे कंधे पे तो ना चढ़े ना, अपनी मेहनत करो यार। तो या हमसे हम ये एरियाज बेचते भी हैं, हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कहते हैं यार वी वांट टू डू बिजनेस, हम कहते हैं यार लेट्स डू प्रॉफिट स्प्लिट एंड डू इट, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बट अकेले ना खा जाओ। नहीं क्रेडिट तो दो, सर थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली, टेक केयर। आपका ट्रेडर वेट का लेजेंड्स कौन सा वाला? आपके भी तो 2 ईमेल है ना, कौन सा एक्टिव है? अच्छा वो 621018 जो इसमें रिलीज है, मैं क्लिक $2 सूत्र छोड़ दीजिए भैया, जहाँ क्लोज काटा तो जब प्रॉपर्टी वेट करो आ जाना, नेटवर्क करना शुरू करना, कैंडल दी इतों समझ लग जाती सारी। मेट्रो बेस्ट है इस FTT के इसको समझना पड़ेगा ना, कैंडल को समझ लेना थोड़ा, ऐसे तो सिस्टम ही देख रही है, नंबर रेट देख रही, नंबर से चल एरिया ही करनी है, बेस्ट है। पर थोड़ा इसको आपका यहाँ तो कोई अकाउंट नहीं है, पता है, मैं देख के शुरू कर, यहाँ तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इस ईमेल में, तो मैं कह दो यार तो दूसरे में ट्राई करते हैं। ओवरलोड देख रहा ये क्या गड़बड़ हो गया, पसंद नहीं आया। कैंडल कितनी है, चलो ट्राई करें। कैंडल लगी हुई है, किसी को तो कर देंगे तो
ये तो डिलीट हो गया, इसमें तो था ही नहीं। $100 कहते ले आ करने यार दर्शन ये तो सेकेंड अकाउंट में मैंने खरीदा ना था, इस सवेरे बंद अकाउंट करा से तो दसना दूसरे क्या कहते हैं 6 to 1। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਗਈ ਉੱਥੇ 1 2 3 3 4 ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਓਪਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਨ ਇਹਨੇ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਣਾ 510 ਵਾਲਾ 510 ਹੈ ਨਾ 510 ਹੋ ਚੁੱਕਾ 510 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 510 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਫੇਰ R1 R2 ਜਾਣਾ R1 नहीं R1 इसमें भी सब्सक्रिप्शन नहीं थल्ले R1 S1 हाँ S3 नहीं है तो थल्ले सबसे तो हम जैसे आप ही से नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका एक्टिव सब्सक्रिप्शन कोई भी नहीं है अभी। कैसे हो सकता है? फिर ये ट्रेडर में देखिए नहीं। स्टेटस जो है एक सेकंड ट्रेड मार्केट थल्ले खुली है ना इन्हें थल्ले ही जाना ये माइंड में रखो S1 की भी बंद होने का चांस है कौन सा वाला पहला या दूसरा ये पहले जब ऊपर चली जाओ ले आओ पिन डालें S2 हो गया S2 हो गया ना दिस अकाउंट 9 Next, right? फिफ्टीन अक्टूबर को आपने बाय किया था ना, ये 15 को बाय किया था, 1 अक्टूबर यस। लेकिन दूसरी ईमेल में कुछ भी नहीं है, वो कैंसिल भी हो चुके हैं। हाँ उसमें तो कुछ नहीं। मैं दोबारा लॉगिन करके उधर भी चेक कर लूँ। पिन डालें। या सुपर एरियाज और विन लाइफ टाइम। विन लाइफ वाला चल रहा है ये जो अक्टूबर 8 वाला था ये कैंसिल हो गया। पहले वाला जी जी आपने हेल्प किया था, कैंसिल ही नहीं कर पा रहा। फोटो खींच के रख लो, फोटो खींच के रख लो ना।
मिडल अरे कुछ नहीं अभी इनके जवाब का वेट करते हैं। समथिंग इज नॉट राइट। In the meantime, I think I should take this copy of तीन चार अकाउंट नहीं है, लेकिन वन बाय वन करता हूँ, कुछ होते हैं फिर जाना शुरू हो जाता है। पता नहीं मेरा एंट्री जब भी गड़बड़ होता है, जब भी एंट्री डालता हूँ गोइंग टू माइनस, गोइंग टू नेगेटिव। मोस्टली खाली जो मैंने एरिया ट्राई किया, लेकिन जब मैं एरिया ट्राई करता हूँ तब फिर उल्टा होता है। अरे एरिया जब आता है ना, एरिया प्रॉफिट देता है, निकलना है प्रॉफिट, वही तो होल्ड नहीं करना उसको। जैसे एक दिन वो हुआ था ना, एकदम से चढ़ एरिया गया रिवर्स, कहीं एरिया जो है रिवर्स नहीं है, अभी रिवर्स कर देगा ट्रेड राइट। जो चल रहा है वो ईएस एरिया से में, पैसा निकालना है। ईएस और एनकी दोनों में जो है एक बार कौन सा फ्राइडे था या कौन सा दिन था, तो एकदम बिल्कुल चढ़ते ही जा रहा था, वापस नाम नहीं रहा था कि वो वापस आ जाए। They didn't give room to आपने खुद ही देखना है कब निकलना है। अभी मैंने आपके सामने ट्रेड ली, $38-40 दे रहे हैं, मैं निकलूँगा 51 लेके निकलूँगा, ठीक है। ये देखना है आपने, 51 ले लिया अभी एसी स्विंग में, जैसे अभी ओवर होल्ड हो गई थी, ओवर बॉल में ले लिया, अभी और जाएगी 51 आ गया। आपने निकलना भी एरिया से भी, कैसे निकलना, ये सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से पहले स्टडी करो, ये किससे जाता है नीचे, कितना जा रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, वो देख के उसमें कहाँ घुसना है, इसकी प्रैक्टिस करो। अभी नीचे मार्केट गिर रही है, गिरने दो, ट्रेड की वेट करो। अभी 570 लगा के 65 लगा के 530 पे आ गई है, और गिरने दो, 500 पे जाने दो। 510 एरिया है, अभी देखो फिर जाएंगे इसमें एक बार, ठीक है, जाने दो, अभी नहीं जाएगी, अभी ये 19% है, अभी जाएगी नीचे तभी ट्रेड में जाना है, पहले नहीं जाना। ये देखना है 530 पे आ गई, फिर वहीं पे जाएंगे नीचे 500 के आसपास, 500 से नीचे की स्थिति दिखेगी तो नहीं जाएंगे, ये देखना है। एरिया आ रहा है 510 का, 510 का एरिया, रिस्क लेना है उसमें, छोड़ के 510 से 520 हो गया तो निकल जाना। 510 आएगा ना, मैं आपके सामने जाऊंगा और निकलना नहीं होता। 510 भी देखना है, आपने जाना है कि नहीं जाना है, ये बताए, ये अभी बताएगा। अभी जाना है कि 521 आ गया, 510 पे जाना ही जाना है, अभी पहले आ गए, ये चले गए हम 510 पे चले गए, ठीक है। अभी 520 चला गया, 500 लगा के, ये देखो प्रॉफिट आ गया। अब आपने निकलना भी है लेके, ये देखो जब 51 से 36 पे काटा इसमें, ये 510 का एरिया चल पड़ा, फिर दोबारा तो निकलना भी है लेके। आपको ये नहीं है अभी एरिया आता मैं खड़ा रह जाता हूँ, प्रॉफिट लेना निकलना, तो 510 में फिर ले लिए, 515 लगा के मुड़ गया, मैं 515 पे चला गया, क्योंकि वो ओवर सोल्ड हो गया उसमें, ओवर ऊपर जा रहा है, और 530 हो गया, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए गया। एरिया से निकलना भी है, एरिया ने ऐसे नहीं देता है 20-25 पॉइंट की, तो बस दे देता है, वो डिपेंड करता है आपने कितने पॉइंट लेने। मैंने 5 से लेके 10 पॉइंट ले निकल गए, अभी और गिरेगी फिर जाएंगे इसमें,
ऐसे करते करते देखो कितने डब्बे बन गए हैं, 1190 हो गए। यही देखना है आपने कब जाना है कब निकलना है, निकलना भी है। थोड़ा सा इसको करोगे ना प्रैक्टिस तब पता चल जाएगा। अभी फिर जा रहा है 520 हो गया, 532 लगा के चला गया नीचे। पता है ना इसमें ना निकलते तो फिर पैसे लॉस चले गए। यही आपके साथ हो रहा है। और आपने टिक निकलना है, कितने टिक निकलना है आपने, नीचे आ गया फिर 520 पे आ गया, 532 लगा गया, आप नहीं निकले तो फिर आपने फिर लॉस देख लिया। ये तो एरिया हो चुका था। हाँ एरिया हो चुका। मैंने तो इनको वैसे दिखाया ना सैंपल। अब मैं नीचे गिरने की वेट कर, गिर रहा है देखो जोर से, 520 आ गया, अभी गिर रही है मार्केट, गिरने दो। मैंने उसमें जितना उसने सांस लिया, सांस से पैसा लिया। फिर एरिया चलेगा, 510 फिर चल जाना, 520 पे है अभी, 520 पे है ना, ये 20% है। अभी नीचे गिरेगी तब जाएंगे इसमें। एक बार गिरने दो इसमें, अभी सबका यहाँ से लेना है, स्टॉप लॉस लेने जाना है नीचे, तब बाय बनेगी, अच्छी लॉन्ग बनेगी। फिर वेट करना 30 पॉइंट लेने हैं इसमें, चाहे पहले चली जाए यहाँ से, क्योंकि 4th टाइम कल के स्टेज पे पहुँच गई जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी शाम को, वहाँ पे मार्केट आ गई फिर 520 पे। इसको ब्रेक करेगी, सबका लेगी स्टॉप लॉस नीचे। सभी को न्यूज़ है कि फॉलो जा रही है? कोई नहीं बस बजाना चाहिए सर। तंग काम भी कराना कि नहीं सर तनु, तुम ऊपर बैठे थे ਤਾਂ ਹੀ ਲੌਂਗ ਕਿੱਥੇ ਲੌਂਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਆ 568 68 कौन सा नंबर आ गया? भाई तो है ही नहीं है 568 भाई अभी 569 नहीं लेकिन 510 भी हो चुका है। सेल करनी थी ना ऊपरों। अब तो मैं 430 का वेट कर रहा हूँ, 430 क्योंकि अगला एरिया है ना। 430 तो शाम को आएगा 2 बजे, जब मर्जी है, जब मर्जी है। पैसा अच्छा 50 की नहीं है, 50 का। सर मेरा ये आप सही कर देना ना, ये टावर कौन सा टावर होते हैं वो मेरे से नहीं हो रहा है। कौन टावर, क्वांट टावर वो नहीं करना, नाइट्रो करना है। नहीं हो रहा है मेरे से। मैं कर देता हूँ। नाइट्रो के कॉपियर या कॉपी और सर लगाना है आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नाइट्रो भी फ्री है कॉपी। सब में लगता है। और उसमें ही बस आप FTT में है ना, FTT में फ्री, FTT नाइट्रो FTT है। अभी मैं FTT के स्टेज में नहीं पहुँचा, इधर ही स्ट्रगल चल रहा है। ये ले गया यहाँ से फिर ऊपर 525 फिर ले गया यहाँ से। अभी ट्रेड में नहीं जाना, फिर 530 फिर चला गया। आपका वो बना दीजिए फिर इन द मीन टाइम। क्या चीज़? नया का कॉपियर मैं कर देता हूँ। आपके पास तो कॉपियर था, नहीं, हमने कभी नहीं बाय किया। ओके नहीं वो ट्रायल वर्जन आपने 2-3 दिन कितना चला पता नहीं, फिर रुक गया, फिर बैक एंड फोर्थ करते करते फिर डिस्काउंट पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन उस पर काम करने छोड़ देंगे। आपने बताया वो 1 टाइम है ना उसका? Yeah, Unirenco. It must be Unirenco. टाइम बाई करिए उसको, देखते हैं जो होगा। ट्राई बहुत कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा अभी तक।
ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ 6 ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ 149 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 800 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰਾ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ 5 ਲੈਣੀ 3 ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਈਫੋਨ 5 ਲੈਣੇ 2 ਲੈਣੇ ਇਹ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Apex ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ उन्होंने कहीं रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, मैं वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि आपका अकाउंट 2 ईमेलों की वजह से मैसअप हुआ हुआ है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂ फिर उसको ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ फिर ਜਿਵੇਂ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ 200 500 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਮ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨਾ ਛੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ In full swing down from 516, 515 this way. नीचे आ गई नीचे आना जरूरी है जिन्नी नीचे आऊगी उन्नी वधिया ट्रेड चल गई किन्नी सारी ऊपर तक गई है 58 तक ले गई तो 20 को एरिया काम कर गया फिर एरिया काम कर गया सर फिर सर ताड़ी 58 आ गई सी ट्रेड निकल गए चलो बल्ले बल्ले हुण दोबारा थल्लेों फड़ियो हुण उपरों ना ले इत्थों ना लियो ट्रेड हजे क्योंकि वो डिग रही है मार्केट अजे 1 बजे शायद डिगे हो Yeah, you don't have an Apex account. So you have a Legends account, so don't worry about that because you're trying to connect to Apex. The moment it auto connects to Apex, it gives you this error. You can ignore it. It says you don't have an Apex. Yeah, it's okay. Yeah, you don't have an Apex account. आगे थल्ले फिर आजा 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 ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏਗੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ अब जब फर्क हो तो फिर खरीदेंगे। नहीं, मैं आपने NBT बाय किया हुआ था ना एक दफा सर्विस। वो ट्रायल कर रहा था लेकिन फिर अच्छा, हर बार जो है गड़बड़ हो गया होते होते डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, 1 सेकंड। कॉपी
प्रॉब्लम मेरा ये ना कि हर दिन मैं नहीं आ पाता, इसी वजह से प्रॉब्लम आ गया। तो आपसे शेयर भी किया, फिर आप कितने लोगों के साथ डील करते हैं तो भूल गया। मैं नहीं आ पाया, एक्चुअली बोलने का तो नहीं। हमने कहा था रिकनेक्ट कर देंगे, फिर पता नहीं क्या डिसीजन हुआ, उसके बाद से डिस्कनेक्ट हुआ। FTT का नहीं रिप्लाई किया। मैं अभी ग्रुप में फिर ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड में। रीजन तो बताए ना क्यों बंद किया, रीजन भी नहीं, वो कहते हैं रिदमिक ने बंद किया। मैंने कहा क्यों? पैसे सारे अड़ा रखे हैं आपके, देखो तो। नहीं, पैसे पूरे हैं, बैलेंस पूरा है। पैसे अपना जो पॉकेट से लगाया वो अड़ा रखे हैं इन्होंने। निकाल वो तो वो दे दें, फिर चाहे क्लियर हो जाए। यही है। 12,000 में से मेरे, अच्छा 4 के सामने अप्रूव लिखा आ गया है। वो पैसे वो कब आ रहे हैं, वो उसकी ईमेल नहीं आई? नहीं, उसकी ईमेल दे दें कितनी तारीख को। अभी ये स्ट्रिक्ट करके रूल ना सबके पैसे ले रहे हैं, जिन्होंने अकाउंट लिए हुए भी उड़ाए तो वो पैसे आए आगे दें, यही कर रहे हैं। काम से एरिया का भी दो आपके पास सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है, बता रहा होता है कितना जो आ रहा है वो इसी में बिल लेके निकल जाओ। पहले वाला नीचे चला गया, दूसरे वाले में ट्रेड लेना, ट्रेड लेने से घबराना नहीं, क्योंकि एरिया का कोई ना कोई मीनिंग तो है ना। यदि मिस कर गया वीक में एक दफ़ा, कभी कभी एक मंथ में 2-3 बार कोई बड़े वाला हो ना, वो मिस करता है, न्यूज़ होती है, वैसे नहीं करता एरिया, करता ही करता है। जो स्टॉक वादे पे थे उन्होंने नाम मार्केट में चलना, ये कोई आप थोड़ा भी कर रहा है, इन्होंने कंपनियां बढ़ा रही है प्राइस। हूँ भी ये कंपनी है ट्रेड में कोई फैसला कर रहा है, कोई नेगोशिएट कर रहा है, कोई उन्होंने करके मार्केट अपडाउन हो रही है। तो स्टॉक्स भी थले उत्ते होंगे, $1 घट गया, ये कितने पैसे घट जाते आज सारा प्लस। ठीक है, एप्पल भी प्लस है।
मार्केट में थी ना। टेस्ला डाउन जा रहा है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਲੋਕੀ ਕॉपी कर रहे हैं। हाँ वो बेचना भी तो है जिसने लिया। 268 हो गया है, ठीक है। टेस्ला कितना हाई लगाया, 273 लगाया ਅੱਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ $5 ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆ 232 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। 30 ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੀ 230 235 240 ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅੱਜ ਹਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ 758 751 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। $7 ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ $100 ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਫਾ ਹੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ $120 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 135 ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ $15 ਇੱਕ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲੱਖ ਲਿਆ ਆਉਣਾ, 50,000 ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 50,000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $15 ਨਾਲ ਕਰ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਡ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡਾ। ਨਵੇਂ ਦੀ 140 ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, 140 $10 ਰੇਟ ਇੱਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਪੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਬੰਦੀ ਕਰਤਾ नहीं नहीं वो तो आवाज लाउडर बहुत था ना, बैठा तो हूँ। टू लाउड दिस प्रोजेक्टर। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਆ ਹੋਇਆ ਫਰਾਈਡੇ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ $3-4 ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ या R3 S3 ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 9:30 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। R2 ਤੇ S2 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਖੁੱਲਣੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਗਣੀ ਵੀ ਐਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ। वो कह रहा है 1 मोमेंट, उसने फाइनली रिप्लाई दिया। 450 तक ले आएंगे सर आज लगता है कि नहीं। 450 तक ले आए ना आज। कल रिपोर्ट नहीं आज नहीं है, बुधवार मंगल बुध की रिपोर्ट सुपर एरिया खुले कितने दिन ये अबाडो कौन सी कंपनी है? अबाडो वो ये रियल पैसे अपने डालने अगर किसी ने, तो ब्रोकर है। नो क्रिप्टो में करता है। जो लोग बिल्कुल ही ऑफलाइन रख, देखें रियल ब्रोकर तो GFF AMP है ना, ये हैं ऑफशोर। अगर किसी ने नहीं शो करना कुछ भी तो ये 530 से 550 लगा के प्राइस ਨੂੰ 59 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮੈਟਾ ਸਰ ਬੋਲ 1.43 ट्रिलियन की कंपनी 18 अक्टूबर को पे किया ना आपने? जी जी आ गए वो।
पर जाना नहीं सर जी कल रात वीडियो लोड की थी अगर वो भी चेंज की कल एफटीटी पे राती इस साल में मेरे 4 से 5 हो गए पास फिर भी वो लेके नहीं पैसे ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੈਠੋ ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ ਰੀਜਨਸ फीस टेक पर ट्रेड थ्रेशोल्ड तो which options की है एक्चुअली ना कि पता नहीं चलता तो ये आर्ट रेट वाली है ये तो ये बंदा पैसे दे रहे लीजेंड भी बड़ी क्योंकि चले इन्होंने लीजेंड को प्रमोट नहीं किया एफटीटी को किया लीजेंड को किया ना अच्छा क्या सब लोग ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਪੁੱਛੋ अच्छा ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇ ਬਿਠਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੈਡ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਲੇ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਫੇਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੈਂਡਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਪੈਟਰਨ ਵੀਕ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਬਕਸਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਫਿਰ ਗਈ ਜੋ ਸੈਟਿੰਗ ਡੇਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ 60 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ 2 ਵਟਐਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੈਂਡਲ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਰੱਖੋ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅੱਛਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਕ ਦਾ ठीक है और 5 डेज करता है चलो पर यार ये वो अपने कुछ चलो लेट्स सी ऑन है उस बाद फिर देख रहे हैं ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 532 33 ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਇੱਕ ये तो बहुत ठीक है ओके ठीक है ओके ठीक है ओके मैं समझ गया रिएक्शन आएगा ठीक है बाकी ओके oh yeah again we have to do 55 चलिए यार इतना नहीं ठंडी हो गई मार्केट
ठीक है तो बात ओ यस लेकिन अगर कुछ किसी को बात जो भी you can do it whatever your chart says, what you set the chart कर सकते हैं It's not only one time you touch करके दोबारा नहीं आएगा लेकिन ओके ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਕੈਂਡਲ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 5 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀਤਾ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਮਿੰਟ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜੋਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਕਿਹੜਾ ਚੜਨਾ $530 ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਕ ਕਰਤੀ ਉसी रेंज में जा रही है 520 तक जाती है इधर है जी इसको लगता है कि एक्सपेक्टेड लो तक आएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रीन बॉक्स बना हुआ है मैं बोल रही हूँ कि इसका जो ग्रीन बॉक्स है नीचे एक्सपेक्टेड लो इसका नास्डक का कहाँ पे 60 मिनट कहीं पे भी आ जाए वेट कर मार्केट में मूवमेंट नहीं है वो सुबह 9:30 से स्टार्ट होते ही 10:30 बजे तक उसमें जो कर सकते उनके लिए अच्छा है जो नहीं कर सकते उनके लिए बात का टाइम अच्छा है स्लो में लगे मेरा मसला में मुझे ये एरिया सब कुछ आता है एरिया ही करो बस मुझे ये सब ये प्लेटफॉर्म का मुझे कुछ भी पूछते मैं आपको बताऊँ मेरा मसला है मैं जब क्लोज करना शुरू करती हूँ वो कट ऑफ नहीं करती एड करती हूँ देखो मैं दिखाता हूँ इधर आज मैं भी यही करता था अब देखो ये 1152 बने हुए ये 38 का एक लॉस काट दिया मेरा मन नहीं था अभी ट्रेड में बैठने का ठीक है इसमें ही ये 11,500 डॉलर बना हुआ है इसमें 38 एक काट दिया अभी काटा थोड़ी देर पहले मन नहीं कर $14 एक काट दिया ट्रेड गलत पड़ गई ठीक है ये अभी बाय ले ली यहाँ से मैंने लेके छोड़ दी अभी इसका मैंने ये क्लिपिंग भी लगा दी है क्योंकि नीचे गिर रही है मार्केट ठीक है ये $14 का एक और लॉस ले लिया 340 का एक लॉस लिया ये ऊपर बाय लगी हुई थी ऊपर दाई जा रही मैं वेट करता इसको 500 600 700 करते जाना था ये लगी थी 460 पे जो इसका अभी 390
377 चल रहा है। अच्छा ये जो 100 आपके पॉइंट के नीचे 1000 डॉलर माइनस हो जाना था ना, 350 काटता। मैंने नीचे से कितने पैसे बना लिए उसको काटने के, काटोगे तो पैसा बनेगा। ਭਾਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈ ਜੇ। ਹੁਣ आ जाते अच्छा फिर ये बता क्या दें। माइक्रो करते हो? मिनी या माइक्रो? ये देखो 352 एक काटा, 340 बस, उसके बाद कोई नहीं एक और काटा हुआ है, $10 एक काटे हैं। जैसे ट्रेड गलत पड़ गई मैं निकल जाता हूँ उसको, ये सारे प्लस करके 1152 तब दी, 340 काट के दी, काटना पड़ेगा, नहीं तो वो 1000 का लॉस काम नहीं करने देगा। वो ज्यादा होता जाएगा, आप ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। यही होता है ना। ये देखो अभी ट्रेड ली है ना, ठीक है, अभी मैं प्लस में बैठा, 54 माइनस 50 60 80 वो माइनस चली जा रही है, अभी नीचे जा रही है, मैं बाय में बैठ गया, अभी देखो 134 हो गया, ठीक है। अभी मैं निकल जाऊंगा क्योंकि ये आरडी नीचे से पड़ी है, नीचे से पकड़ी, वो ऊपर से पकड़ी थी। ये फिर ये 10 पॉइंट का है, ये 10 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा कवर हो जाएगा। अभी इसमें ओवर ट्रेड नहीं करना, इसको वेट करना है। एक बाई की स्विंग आएगी, निकल जाएगी, और नीचे और गिर गई। आप ये मिनी करते हो माइक्रो? चला गया है ना। $10 एक पॉइंट का $10, $5 अब नीचे गिर गई है ना, अब मैं बड़ा करता हूँ 10 1 पॉइंट। ये डिफरेंट है, ये मिनी माइक्रो नहीं, ये डिफरेंट है। ये दूसरा है प्लेटफॉर्म दूसरा है, 700 पे चला गया। फिर मैं कितने कुछ भी नहीं किया, काम कुछ बिजी हो गया। बाद में देख के आया कि मैं देख में गया था, अकाउंट गया ये कल का गेट पूरा करने आ रहे हैं, बस ये गेट पूरा करने। कल गेट वापस हुआ था ना मार्केट, एक्चुअली वो कर लिया। इतना 11 बार जीता है। मैं मुझे भी पता नहीं कितने लॉट है, 1200 लॉट मेरे फोन में ऐसी 6000। मैंने $10 पर काट दी, क्योंकि ये अभी फिर नीचे गिर सकती है। मैंने $10 काट दिए नीचे, वही जब ऊपर जाएगी मैं लूँगा फिर दोबारा। अब ये देखना आपने ये नहीं, मैं काटनी नहीं थी, नहीं मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेलिंग $10 मैंने लॉस लिया आपके साथ। ये देखो, मेरे को इतनी टेंशन नहीं है इसकी। देखो $10 38 पहले लिया हुआ था, 10 अभी लिया इस ट्रेड में। ये सही कर दिया, 50 नहीं जाना था उसने, मेरे को नीचे 100 माइनस दिखा दिया। जब मेरा 100 कवर हो गया मैं निकल गया, इतना नहीं जाना। ऐसे ही 50-100 करते करते पैसे बड़ी ट्रेड अब लेके छोड़ भी दूँ ना, देखो तो आ जाएगी, पर 380 पे मैंने काट दिया, ठीक है। 382 पे मैंने पकड़ी थी, अभी चल रहा है 382 ही चल रहा है, सेम प्राइस पे चल रही है। यहाँ से मैंने नहीं, ये दूसरा प्लेटफॉर्म अभी चली गई, ये चली गई है 387 में, 5 पॉइंट ऊपर चली गई है। अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म? मेटा का ये देखो ऊपर चली गई, वो 587 चली गई, 582 पे 5 पॉइंट में इसको आ जाने।
27. Testing. मिड बैंड तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, कभी काम करता है कभी नहीं एनजीओ में। पता नहीं ये लास्ट आवर में जो लालच जो आ जाती है कि आज ही कर लूँगा, यही तो लालच ही तो रोकनी है। ट्रेडिंग तो आसान है। उसी दिन फिर चीज दूसरा खरीदना पड़ता है। करते करते 60 से ज़्यादा खरीद चुका हूँ। फिर से सांसद चालू कर दिया। अच्छा वो उसका ट्रायल कर रहे थे आप लोग ऑटो ट्रेडिंग का $500 ये परफेक्ट काम कर रहा है। उसी का नया वर्जन लेकर आऊँ।
सर ये नास्डैक में ऑटो ट्रेडिंग जो लगाते हैं वो काम कर रहा है या स्लिप हो रहा है? उसी पे काम हो रहा है। अच्छा जो आप कर रहे हैं। ठीक है। इजी है ना? नहीं, वो पिछला डिस्टेंस 15 मिनट का है। कैंडल आप 5 मिनट वाली लगा दो और 1 मंथ तक देखते रहो। नहीं, मुझे आज का ही देखना चाहिए। ये आज 5 मिनट के बाद नई कैंडल आई। हर 5 मिनट एक माह का पीछे तक जा सकते हैं, 1 महीने पीछे तक जा सकते हैं। चलो
750 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 500 ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 850 ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਲੋਟ ਨਾਲ 2 या 3 माइक्रो लगाओ ਇਹ ਡਰਦੇ घटाने हैं ना ਇਹ ਡਰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ नहीं डरो घटाने हैं ना ਘਟਾਣੇ कम करने हैं ना 3 या 4 वॉट लगाओ माइक्रो की कितने करा रहे हैं माइक्रो जो जो आप कर रहे हैं ना इसमें 4 लोट लगाओ आप एक लगाते हो 4 कितने कटाने हैं 400 माइक्रो जल्दी कुछ चला भाई ऊपर चलता ना अभी देखो कितना नीचे आ रहा है अगर आप टाइम लगा देते हैं अभी बैठे ओवरवोल्ट ओवरशूट को ना रिवर्स कराओ
मार्केट ना 600 के करीब जानी चाहिए कि अगर सेल लगते नहीं तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये सही बात है। यहाँ से सेल करूँ तो देना ही है। राइट है सर। अभी हो गया अभी 60 में उसको निकालना है। हम $60 more करेंगे। 60 फोन इस्तेमाल करना है, अब ज़्यादा नहीं लगाने, अब सिंगल माइक्रो। ज़्यादा लेस हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी। मिनी कट माइक्रो कट। एक माइक्रो का सेल लगा दो। अभी एक क्वांटिटी पहले हमने 4 की थी ना, 4 स्विंग तेज है, ज़रा ध्यान से डालना। चार्ट में हाँ जी, निंजा के चार्ट में एमडी मैक्स प्राइस है क्या चीज़? चार्ट निंजा चार्ट है ना? हाँ। थोड़ा क्या डालें? थोड़ा सा क्या डालें? इनको और पता कर लो, तो उसके कारण कोई फर्क नहीं होगा ट्रेडिंग का ना, ऐसी तब कभी रोटी नहीं दिखती। सारा निंजा का चार्ट है देखेंगे चार्ट जरा बच्चे प्रॉब्लम भी आ रही है सॉफ्टवेयर ये नहीं है लेजेंड वाला चार्ट बनी जरा से ऐसा देखो मेरे को ना लेजेंड है लेकिन इन्होंने बोला पैसा है ये बात तो ये वाली 30 मिनट अच्छा तो चेंज नहीं होता अगली वाले इंस्ट्रूमेंट्स
420 तक है, पर 25 उसी अकाउंट में दूसरे से मिनी से माइनस से हो गए। हाँ, वो दूसरे अकाउंट में दो सेम अकाउंट इधर से ये 25 इधर से ये मैं भी यही करती हूँ इसलिए थैंक यू। सर मेरा ये क्या कहते हैं उसका मेरा टैक्स का देना प्लीज। क्या चीज? जो नया वाला जो ATM? वन टावर नहीं है, दूसरा वाला। वन टावर। दूसरा वाला।
नाइट्रो Nitro. हाँ जी मैं इवनिंग में करूँ ठीक है सर ठीक मैं किस टाइम पे आपको कॉल आफ्टर 6 थैंक यू सो मच नो ओके हाँ जी सेल करो अब ये देखिए सेल लग गया ये लिखा है लिमिट ये स्टॉप है स्टॉप उठाएं ऊपर खींचे ये स्टॉप लॉस लग गया वो तो ऐसे ही है हाँ नहीं उसको प्रॉफिट की लिमिट लगा तो नीचे लिमिट कर दो मैं नीचे लिमिट लगा उसको नीचे ड्रैग कर वो लिमिट लगी मेरे देखते ही चीजें हो गई सही नहीं सर इसको खींच के नीचे ला देते फिर वो ऊपर चला जाता था गलती की जा रही थी